Okay. स्टार्ट है रिकॉर्डिंग। So start करता हूँ मैं. So good evening. Today we'll have a session on resume building and profile development hosted by me, Tirat Bhatwala, as part of ACM research. So how exactly should a resume be crafted, and how exactly should your profile be uh, graded as per your career choice? That's what we'll discuss today. So like तुम लोग ने अभी बहुत सारे प्रोफाइल pathways choose किए थे. Like from what I like noticed, like some of y'all want to do MS directly, some of y'all want to have work experience and then do MS. Some of y'all want to get into an MBA or finance stream. So we will like mostly cover all of the bases today and tell you how to tailor your profile, like further profile and your resume for each of your career choices. So first, beginning with, so like from what I've noticed, 80% of y'all want to have work experience first, at least 1 to 2 years, and then pursue your MS. So the session will be mainly targeted towards them, but we'll discuss the other pathways as well. So for a 2 year work experience plus MS pathway, you need a hybrid profile where you need both employability and academic rigor. So uh, what employees want is practical experience, industry experience, as well as like any uh, like computer programming, DSA, if you do, that's what employees mainly target. But universities, they target a different aspect of a profile altogether, which is academic rigor. So, like different countries, universities target different types of research work. Like some prefer to have strong academic CJPA stuff, and some prefer you have novel research, so like A-star papers or something like that. So building one single coherent profile, especially if you are targeting multiple country to universities, which is actually what I would advise in this current political scenario. You target multiple countries to universities. To build that, you need to have both engineering impact and as well as research potential, obviously as well. So for each of the streams, like what exactly will be required? So for a work experience plus MS profile, you will need high high DSA and CP profiles. So your DSA gain, your CP profiles like code chef, code forces, lead code, ये सब एकदम like strong होना चाहिए because पहले के जो 1 to 2 rounds होते हैं in the internship या job application वो इसके basis पे ही होता है. So अगर जो यही clear नहीं हुआ then फिर वो tech internship या फिर वो बाकी सब चीजें वो consider होती ही नहीं है. So इसलिए DSA CP तो करना ही है. Then your research papers do play a small role, especially if you are targeting like AI roles या मतलब research related roles. अगर जो core HT कर रहे हो तो फिर research maybe not that much, but especially like if you're planning to do an MS, then it's obviously beneficial कि तुम पहले AI role करो. So इसलिए थोड़े research work होना उसके लिए भी जरूरी है. Now, for example, I received an offer from Lexi Labs and Loss Fund. These two are laboratories based in AI labs based in Bangalore, and like they mainly target research engineer kind of stuff. अभी उसके लिए you need both research paper and as well as some industry experience. So that's why that's why I want to emphasize both of them. Now hackathons and volunteership is required, but like not that much honestly for job perspective. For a direct MS perspective, obviously you will have a huge weightage on research papers, but you will also need some volunteership experience as well because they target leadership experience. So if you are proven to be a strong leader in your either your project group or your subcommittee group, then it signifies to the university that you can conduct research on your own as well. So independent research ability is actually quite uh, like plays a quite big factor in certain university applications. For example, for CMU, they specifically mention कि individual research projects तुम लोग के कौन से हैं, वो तुम लोग state करो in an अलग Google form. Now, some universities prefer कि group research programs होने चाहिए, like group research efforts होने चाहिए तुम लोग के. For example, UIUC, which is University of Illinois Urbana-Champaign, which is one of the top five public universities, so उनके fees कम रहते हैं. They prefer public like research collaboration with uh,
like faculties and co-students as essay. Now that's why they also host this UIUC Plus Summer Research Program, which I will actually provide a link as well in the coming months. And इसमें वो लोग like 50 to 60 people के research assistants as a group लेते हैं and फिर उससे like they target a research problem. I was actually part of this group 2 years ago in 2024 summer. So yeah, it depends कि तुम लोग को exactly कौन सा research, like what kind of universities are you targeting? Like are you targeting a PhD? Then direct MS, direct like independent research is probably a bigger factor for you than teamwork. But honestly, you need to be strong in both to signify a complete profile. Now there are certain people who want to do MBA as well as like some kind of financial. तो उनके लिए तो I would say कि volunteership and hackathons are the most important factors because obviously leadership तो चाहिए ही रहता है in MBA के profiles, like that's something that they single out. But hackathons are actually a great way to showcase because they can show कि okay मैंने ये idea pitch किया था इस इधर मैंने like ये suppose 1000 teams थे उसमें से मेरे ये top 5 teams में मैं आया and उसमें मैं team leader था. So I actually क्या बोलते हैं manage other people का workload and manage to create a coherent project. So that's something which I think MBA profiles also value. Now, I'm not sure कि MTech कितने लोग prefer कर रहे हैं, but like if someone wants a low cost MS alternative, then MTech is a, I will not say a good way to go, but a decent pathway. So for that, obviously you need to target GATE. Now, GATE is something which requires rigorous preparation. But if you are willing to do it, I believe it's not that hard to crack as well. Like personally, मैंने 1 month prep किया था, उसमें under 500 rank आ गया था. Now that was GATE DA, but still, like you can like क्या बोलते हैं from that you can evaluate कि to get a very good rank say under 100 या under 10, which I believe हम लोग के कॉलेज से भी आयान शेख करके है उसको आया था under 10 या under 20 rank. So that's also possible. Like अब तो ऐसे मत समझना कि T3 कॉलेज से तो नहीं मिलेगा गेट में. Everything is possible like if you do prepare well. So like as you can see हर एक करियर पाथवे के हिसाब से तुम लोग को हर एक अलग अलग वेटेज करना पड़ेगा. नाउ दैट्स व्हाई वी रिलीज द रैंकिंग वाला लिस्ट कि उसमें अगर जो यू like if you give more weightage to certain aspects then you will be able to devise कि okay ये मैं pathway को सारा value कर रहा हूँ. So like that's the whole point of that ranking वाला thing. Now I would like target specific objectives कि इसमें कैसे like profile में क्या focus करना चाहिए. Now, if you are targeting European universities के uh, like European Union के universities, then I would say keep focus very highly on your CGPA because the graph on your right is from the best German public university, TUM, Technical University of Munich, and you can see their evaluation criteria is solely based on your grades and your credits. So what they do is that they require you to convert your academic curriculum to their grade system, which is ECTS. And उसके basis पे if you rank above a certain score, so over here you can see it's like 51 points or above. तो वो score के ऊपर अगर तुम लोग ये selected courses में grades है, then you will automatically get an admission. So like to consider कि अगर जो EU universities में apply कर रहे हो, then वो CJPA electives पहली बात तो बहुत अच्छे से choose करना because they like BA या फिर PBC ये सब electives का honestly वो लोग weightage देते ही नहीं है. Uh, if you have like option between say compiler design और business analytics जैसे हम लोग का था, so I regret choosing business analytics क्योंकि तभी मेरे को वो सीधे PA का boost चाहिए था. बट अगर like फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये काउंट ही नहीं होता. सो इससे अच्छा है कि यू चूज कंपाइलर डिसाइड मे बी गेट वो भी नहीं मिलेगा ए प्लस मिलेगा वैसा भी चलेगा बट अगर वो भी मिल गया देन इट स्टिल एटलीस्ट काउंट्स टू द ओवरऑल क्रेडिट. सो ये कंसिडर करना. Also, some universities in US, especially the safe universities, yeah, target universities as like it depends on your profile, like USC, which is University of Southern California, based in LA. They have a soft baseline कि 9 plus CGPA हुआ, then you will most probably get an admit. Like personally मेरा 9.3 CGPA है और मेरे को इधर से admit मिल गया MSNCS में. So for Indian undergrads especially and अपने college से तो बहुत सारे alumni है from USC. They
प्रेफर कि 9 प्लस सीजीपीए हो तो फिर तुम लोग को मोस्टली लाइक 95% एडमिट मिल जाएगा लाइक इवन इफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट्स और पेपर्स और एनीथिंग एल्स इज नॉट दैट स्ट्रांग। सो वैसे वो मतलब एक बेसलाइन सेट करना कि अगर जो मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं 9 प्लस रखूँ मेरा सीजीपीए, एंड अगर जो मैं ईयू यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा हूँ तो 9.5 प्लस रखूँ ऐसा। सो दैट वाज रिलेटेड टू सीजीपीए। Be related to builder experience. So this is for your industry and professional programs. So I'm not sure कि तुम लोग कितना जानते हो about master's programs, but there are two kind of master's programs. There's something known as research-oriented programs and something known as professional-oriented programs. So over here, I've stated some professional-oriented programs. So Cornell University's engineering in CS, that's a 1 year program, which is like highly uh, fine-tuned for startup building startups and shit like that. And CMU's MSAII program, which is Masters in Artificial Intelligence and Innovation, that's like that has loads of courses for, as you can see, AI and future markets, law and computer technology, AI ethics. So it's there like you will be able to like easily get a analytics kind of role in FANG companies. And like honestly, CMU MSCI is one of the courses, like one of the programs which has the lowest acceptance rate as well. So ऐसा नहीं है कि research role नहीं है तो फिर like there's no not much competition. इसमें इंडिया से especially बहुत सारा competition है. Like I think it has close to 8% acceptance rate, which is like among like top 10 hardest to get programs, I would say. Now, one easier program, NYU Tandon, इसमें if you know NYU का कैसा prestige है, then you would realize कि उसके industry connections बहुत सारे हैं. Obviously, it's located in New York, so there's a lot of finance and court connections as there, and there's also medical component. So, like I think NYC has one of the biggest cancer institutes. So, Gosha, if you're targeting those universities, like those kind of research domains, then NYU is a great place to be. So the whole point of showcasing these universities is the तुम लोग का इंडस्ट्री का जो इंटर्नशिप है, टेक इंटर्नशिप है, दैट शुड बी लाइक वेरी स्ट्रांग. नाउ टैंडन में भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा तो चलेगा, बट स्पेशली इन MSCII एंड M engineering. So for MSCII, like there's one graduate person I know from our college and उसका I think Amazon में या फिर नॉट 100% श्योर कौन से उसमें था, बट आई थिंक अमेजोन में ही था. मीर वो अर्जुन का किसमें था इंटर्नशिप, अर्जुन बट एच डी एफ अर्जुन से एच डी एफ से नहीं 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 उसका उसमें था ना अपने अर्जुन और वरुण का एक साथ था. देख. अर्जुन वरुण बजाज फिंसर्व. Bajaj. So Bajaj is like the like those kind of institutes are like something you should target. Like especially in your semester 6 के break या फिर semester 4 के बाद वाला भी समझ रहे कि उसमें अगर जो you get some kind of role like through network या फिर कैसे भी, then like that would be particularly helpful for admit to these programs. ऑल्सो वो ये मैं रेज्यूमे के बारे में भी बोलूंगा, बट आई विल सी टू लाइक वो जब ये एक्चुअल रेज्यूमे में मेरा दिखा होगा तभी मैं बोलूंगा. बट हियर यू कैन सी एग्जांपल कि यू शुड यूज नंबर्स, यू शुड यूज कीवर्ड्स लाइक reduced, optimized, improved, automated, ये सब. And like there's a certain pattern. So there's a certain pattern called a star. वो use करना चाहिए, which I will explain further like later as well. Now for research-based programs. Research-based programs के लिए like the strategy as mentioned below is कि you should have literature reviews, baselines, hypothesis, methodological rigor and novelty. ये सब तो होना ही चाहिए जो भी तुम लोग के research paper में है. ऊपर से like you should have some open source artifacts which you can upload to Zenodo, which is a platform की इधर like it is an open source data sharing platform. इधर अगर जो तुम लोग के जो कोड है या फिर मॉडल्स है या फिर डेटा सेट्स है वो अगर जो इधर अपलोडेड है, देन लाइक यू कैन डायरेक्टली लाइक insert the links of them in your resume या CV. एंड ऑब्वियसली अगर जो तुम लोग पर्सनल वेबसाइट बना रहे हो विच आई वुड हाईली रिकमेंड, उसके लिए जो पोस्टर्स है, यू शुड क्रिएट पोस्टर्स ऑफ योर पेपर्स या ब्लॉग्स या फिर इवन सेशंस लाइक द वन आई एम कंडक्टिंग टुडे. ऐसे भी लाइक दे आर हाईली
useful because वो what you can do ना वो poster सीधा you can send it to a professor like if you are in contact with a professor कि okay मैंने ये काम किया था और ये मेरा पेपर पब्लिश है तो अभी वो पूरा पेपर तुम नहीं पढ़ेगे तो एक पोस्टर इज अ वेरी गुड वे टू कम्युनिकेट विद देम कि ओके ये मेरा पेपर आइडिया है ऐसा और इसके ऊपर मैं ऐसे आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ ऐसा नॉट ओके सो ये सर्टेन यूनिवर्सिटीज है जो रिसर्च एक्सपीरियंस वैल्यू करते हैं CMU MSc is masters in computer vision and इसके अंदर you can see there's one summer semester which is particularly allocated to research like research ही करना है ये एक semester summer semester में similarly for UIUC MSCS you can see there's thesis research component then for NYU Current is one of the best math institutes in the world like I would say it is the best math institute in the world. तो अगर जो तुम लोग को फाइनेंस में जाना है, quant में जाना है या फिर any kind of stuff related to math, तो उधर like focus on this program. So but over here also you can see there's MSc series ये option रहता ही है. So ये mostly करना ही पड़ता है like if you value कि मेरे को research scientist बनना है या फिर इसके बाद मेरे को PhD करना है. So these are some programs like you have to highly focus on. Okay, so a certain roadmap for you if you are targeting both uh, 2 years work experience and fair MS. So I would highly suggest कि as we have said before, cold mailing चालू कर दो or research internship try to secure one like in Sem 4, Sem 5. Personally, I acquired like my research internship at IIT Patna in Sem 5. उसके पहले I did the UIC plus summer research program between Sem 4 and Sem 5. So it's obviously possible. So ये like cold mailing चालू कर दो open source programs में देखो कि PR है कोई ECPR है कि नहीं उसमें try to contribute. There are two major open source क्या बोलते हैं programs as well. So there's ESOC which is European Summer of Code and GSOC Google Summer of Code. So ये दोनों में try to figure out कि उसमें कैसे मैं participate कर सकूं. Like even if you don't get in, फिर भी it would be highly beneficial because to PR से तुम लोग के you can like directly state them in interviews. Like for example मेरा जब भी Lexi Lab में interview हुआ था तभी like it's Lexi Lab is basically a lab for time series foundational models. So like they build their own from scratch time series foundational models. So because I worked in SK Time, which is a library for time series, उधर मैंने जो PRs सिखाए थे, I use those same PRs and showcase them in my interview, and फिर उसके basis पे they selected me ऐसा. So open source contributions are highly valuable. बाकी फिर सेमेस्टर 6 में स्पेशली इफ यू आर टारगेटिंग वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर प्लेसमेंट लाइक प्लेसमेंट कर रहे हो तो फिर कॉर्पोरेट इंटर्नशिप टेक इंटर्नशिप करो नाउ अगर जो MSCI जैसे प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो देन ट्राई टू हैव दी कॉर्पोरेट इंटर्नशिप इन बजाज या फिर वैसे इंस्टीट्यूट्स अगर जो MSR लाइक MS इन रिसर्च या वैसे प्रोग्राम टारगेट कर रहे हो फिर ट्राई टू हैव द टेक्निकल इंटर्नशिप तो AI इंटर्नशिप तो लैब्स में टारगेट करो वैसा then in semester 7 you will obviously have your placements so तभी hopefully via ACM research या फिर via ITD या फिर via research internship you will be able to submit a paper and maybe publish it as well so तब तक अगर जो 2+ papers in good conference या venues हो जाए then your research profile is actually sorted out फिर in sem 8 you can like you are free for to take GRE या फिर TOEFL. Uh, and most probably both of them because GRE lasts for 5 years and TOEFL lasts for 2 years. So when you are doing your job, especially like if you are doing your job, GRE देना बहुत मुश्किल हो जाता है. Like that's what I've heard because उसके लिए like ज्यादा फोकस नहीं चाहिए like you just need 1 month of intense focus. तो फिर अगर जो वो उतना हो गया then you will like easily get the 330 plus 4 out of 340 which is like very good, especially since we are coming from a T3 university. Like India में अपन it's our university is not that well renowned. So US में तो पता ही नहीं है लोगों को. So that's why as CJPA they don't know the value of our CJPA. So they prefer कि since GRE is a universal metric, they can use the universal metric as a standardization tool and they can say कि okay इसका GRE score high है तो फिर इसका CJPA का भी value है ऐसा. And that's why you also need to maintain a strong CJPA as well. So secure at least one research internship and one industry internship, and choose electives and maintain your certificate. Yeah.
Now, some tools which you can use to build your profile and to create your resume, latex overleaf is something which you should be highly familiar with. Of the Jake's resume template, if you haven't already like used it, we will share it in the group like ये session का folder as well. But use that for both industry का resume and research के लिए CV. Also note कि for industry application and research application, you mostly need to create two different CVs. So for industry application, you need a one-page resume because उसके आगे कोई नहीं पढ़ता है. Like even your ATS, which is the application tracking system, वो ये वन पेज सी रेज्यूमे के आगे वो देखते ही नहीं है. सो इसलिए वो वन पेज सीवी चाहिए. बट फॉर रिसर्च एप्लीकेशंस you may use like 2+ pages, yeah, even more pages, because like papers to publications है, जो sessions hold किया तुम लोग ने, maybe any courses, maybe any achievements, that all of that you can write like maybe in थोड़ा depth in your CV, because a professor is likely to, like if he's seriously considering you, then he's likely to view it. Uh, फिर मैं बोलूँगा कि GitHub you need a good profile, like प्रोजेक्ट लिंक्स है वो डिप्लॉय करना. अगर जो कोई GitHub repository है तो उसके अंदर डेमो वीडियोस आर अ ग्रेट वे टू लाइक पूरा, क्योंकि वेबसाइट अंदर खोल के कोई नहीं देखने वाला. तो अगर जो डेमो वीडियो अगर तुम लोग रीड में ही हो इन द GitHub repository, then they can like directly view the demo and उससे they get to know what the project is about. And demo videos are actually a great way because अगर जो तुम लोग का प्रोजेक्ट सपोज 3 months के बाद कोई देख रहा है तो फिर वो तभी यू डोंट नो कि वो चलेगा कि नहीं. बट डेमो वीडियोस में देयर इज अ स्टैटिक representation of your project. तो इसके लिए like there's nothing left to chance. ये obviously चलने ही वाला है because you have recorded it. So that's one thing you should take care of. बाकी हाँ like mostly यही डॉक्यूमेंट करना, लिंक्स अपलोड करना, डेमो रखना. LinkedIn you should use for industry application. You should use it for referrals and interview prep. I know a couple of friends जो LinkedIn के through जिनको referrals मिले and then they eventually went on for like to get the job. And for research, you can use it to connect with current students at the target universities. So like suppose you are targeting Columbia University का MSCS program, तो इसके लिए you can target current students and figure out कि which professors you want to work with, yeah, which yeah, like research groups you want to work with, because eventually you will need to mention those groups in your SOPs as well. So that's why like network करना hard, like connections बनाते रहो and keep a decent profile उस पे भी, LinkedIn पे भी. Now ATS checkers like obviously ये same checkers नहीं use करेंगे fan companies or like any company, but they will use a similar tool. So if you can like make the resume optimized for this tool, like basically these resumes will give a score कि out of 100 तुम लोग का resume का score है 80 या 60. Now this won't be based on your content, but would actually be based on your keywords and your formatting. तो अगर जो तुम लोग का फॉर्मेटिंग अच्छा है एंड कीवर्ड्स अच्छे है, देन एटलीस्ट वो ATS जो फर्स्ट पास होता है जिसमें 1000 कैंडिडेट्स में से 100 कैंडिडेट्स वो चूज करते हैं, वो उसमें पास हो जाओगे. सो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स एज वेल. So now the main important part of the session, which is the CV. So अभी ये तो अभी मैंने सिर्फ रमेश कर दिया है, but I will actually show the CV on overleaf. तो फिर उससे like I'll explain. Okay. Any doubts till now? Yeah, uh, any Yeah, part any that, doubts? किसी को? तो now just side by side खुद का भी resume खोल के रखना हाँ, खुद का and भी resume. बस खुद के जो personal groups है उसके अंदर like note down the points which you are lacking right now and interesting points जो तुम लोग को लगे when Tirith explains his resume वो लिख देना. And then after the session we can you can write it down in your personal groups and then we can have a chat on it as well. So this resume was crafted using Chicks template only. इससे थोड़ा मैंने additions किए हैं. So अगर if you एक want मिनट हाँ, this, गौरी को क्वेश्चन है. या गौरी go yeah. ahead. Yeah, I wanted to ask, can you reiterate the open elective wala point?
Like, Okay. do we have to, so I didn't get it. Like, do we have to choose the subjects that we're interested in, or do we have to choose the easy subjects that give better CGPA? No, don't choose the easy subjects. Like it depends on which venue, like which country you are focusing. If you're focusing on US, like mainly US only, then वो Yeah. लोग उतना electives नहीं देखते ना. Some universities देखते हैं, अभी UIUC होगा या फिर UT ऑस्टिन होगा तो वो लोग देखते हैं. But most universities they don't like check कि कौन सा courses you have like कौन सा courses you have attempted. बट इफ यू आर Okay. टारगेटिंग EU यूनिवर्सिटीज तो उसमें वो लोग सब कुछ देखते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हैं, कौन सा ये कर रहे हैं, एंड दे मैप इट टू देयर यूनिवर्सिटी के कोर्सेज. तो इसमें Okay. एंड वो कोर कोर्सेज से कंसिडर करते हैं. तो इसलिए अगर जो EU यूनिवर्सिटीज कर रहे हो देन लाइक चूज सिलेक्टिव्स व्हिच आर लाइक स्टैंडर्ड, लाइक कंपाइलर डिजाइन है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है. नाउ सम ऑफ देम माइट बी Mhm. electives, so वो मतलब ऐसा चूज करना. Okay, got it. एनी मोर डाउट्स? और ये पिच डेक भी मैं, प्रेजेंटेशन डेक भी मैं बाद में शेयर करूंगा ये ऑफिस से. Yeah, Mahi, you had one question. Yes, I just have a doubt related to the resume building. Why do you keep insisting on using overleaf and not other existing templates? तो फॉर ओके, फॉर बोथ इंडस्ट्री एंड रिसर्च दोनों के लिए बोलता हूँ. फॉर इंडस्ट्री you companies use ATS. ATS is a software, application tracking software, which like which scans a resume. So no one at big companies, अगर उनको 1,000 applications आ रहे तो no one is like no human is manually reviewing your resume. It's been put through an automated system, and for that automated system, latex is highly optimized because ये जो formatting है basically, ये एजुकेशन के बाद ये मतलब ऐसा दिस फॉर्मेट की ये ऐसे लेफ्ट टू राइट मतलब ऐसे अभी क्या बोल रहा है पॉइंट Mhm. वाइज ऐसे फॉर्मेट. दिस फॉर्मेट इज like highly like will give a good score in ATS के systems. And like ATS के systems ही filter करते हैं कि तुम लोग के अगर जो certain threshold के ऊपर scores, like certain threshold के ऊपर तुम लोग का resume का score है, then they will put you through the next round of interviews. So Okay. इसलिए like for industry roles, that's why you prefer overleaf for the resume building, resumes. And for research, if you are doing research, then जो भी papers लिख रहे हो, जो भी portfolios या literature reviews जो भी लिख रहे हो, you are using overleaf only. So professors जो तेरे academic क्या बोलते हैं academic committee है, admission committee है, वो सब they are used to reviewing resumes built on overleaf या फिर latex. So that's why अगर जो you also use a similar template, then they won't get confused basically, because at max they'll spend like 1 to 2 minutes reviewing a resume. And like if it's an industrial तो वो लोग like if you know it's like a 6 second, एक होते हैं कोई कोई कंपनीज पे 6 second रूल होता है कि 6 second ही देखेंगे वो लोग अपना रेज्यूमे. फिर कोई कोई कंपनीज पे 30 seconds होता है, कोई कोई कंपनीज पे 2 minutes होता है. सो इफ देयर इज अ संडे फे कि अगर जो उनको पता है कि इधर एजुकेशन होने वाला है, इधर पब्लिकेशन होने वाला है, इधर एक्सपीरियंस होने वाला है, तो फिर वो मेन ये सब चीजें ही देख लेंगे ऐसा. नाउ सपोज कि यू हैव यूज्ड रेसमे बिल्ट ऑन कैनवा, तो तुम लोग का कैसे भी डिजाइन हो सकता है राइट. इधर पहले अभी इधर मेरा जो रेसमे था फर्स्ट ईयर में, Exactly. इधर फोटो था मेरा, फिर इधर इंटरेस्ट थे, फिर इधर लोकेशन था, फिर इधर अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे, एंड इधर एक्सपीरियंस है, इफ यू कैन सी माय कर्सर. तो फिर दैट इज लाइक वो उनका जो पूरा क्या बोलते हैं, their way of looking, analyzing a resume, it breaks them. So for rather than analyzing the content of the resume, they just get stuck on कि okay ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है. फिर वो like it just decreases your chance of getting into companies as well as good MS programs ऐसा. Understood. Thank you. Okay, Paul also has a question. Yeah. Yeah, Paul, hello. सॉरी सॉरी वो गलती से हो गया था, ध्यान में Okay, नहीं था, सॉरी। ठीक है bro. Okay. Also like if you want ये जो template है, like जो ये जो latex file है इसमें like because there are small changes from the standard shapes template itself, तो ये भी मैं शेयर कर सकता हूँ if any of you require. और मैं ये अपना भी टेक्स्ट फाइल अगर शेयर कर लेगा अगर तो तुम लोग को वो वाला फॉर्मेट अच्छा लगे तो. हाँ हाँ, मैं तेरे रेज्यूमे के एक्सप्लेनेशन के बाद मैं मेरा भी दे देता हूँ, हाँ. तो ये सो इसलिए मैं सुनो चलो.
हाँ, मैंने मेरा प्रोफाइल क्यों प्रेफर किया, बिकॉज his profile is probably just too strong, so it's built for a PhD, right? So I don't know if if there are any ACM mentees which are directly opting या Yeah, going yeah, to yeah. apply for PhD, but अगर जो Okay, okay. प्रोफाइल से डर मत जाना बेसिकली, इसलिए मैंने थोड़ा लेस हाँ, एम्बिशियस हाँ। प्रोफाइल पिक किया। या तीरथ, बस हमको ये बता दे व्हाट इज योर एंड गोल। तो जो भी सिमिलर मेंटीज है, लाइक देवांश, या तो फिर देवांश इज एन एमबीए, लेट्स जस्ट से राइट। गौरी इज इन मास्टर, सो they can relate with your resume. Like if your end goal is work ex then masters, yeah, direct masters, yeah, masters in research program, etc. So यस, सो मेनली मैं अभी करंटली मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम का पता होगा। शुभम, which is the incoming schooler, he will explain his resume in a few minutes, and वो इंडस्ट्री के हिसाब से बताएगा, बिकॉज frankly मेरा जो प्रोफाइल है, it's a two-page CV, so it's mostly oriented for MS programs वैसे, but जो actual one-page CV है, which allegedly cracked Google's ATS system, वो उसके पास है। तो फिर I think his resume is probably the best way to understand कि इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में कैसे रेज्यूमे होना चाहिए। सो करंटली ये मैं पता होगा फ्रॉम रिसर्च perspective. From MBA perspective, since there are like very few candidate few mentees, but from what I know, like I think one of my friends is going to pursue an MBA and start करने वाला है, your experience matters much more. सो एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस सीधा होना चाहिए, उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर इज अ बिग फैक्टर, एंड उसके बाद योर प्रोजेक्ट्स एंड योर टेक्निकल स्किल्स एंड योर अचीवमेंट्स. So that should be your order. Like research publications don't matter basically. बाकी जो तुम लोग का ऊपर रखो, अगर जो तुम लोग का स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है तो उसको ऊपर रखो. लाइक देयर इज, आई don't think you should stick to a fixed pattern, because what resume जो screens करते हैं वो लोग what they do is they analyze the resume in this format. अगर जो मेरा cursor दिख रहा है, so this format, yeah, like ऐसे वो इस इतना ही पार्ट नीचे देखेगा. सो अगर जो तुम लोग का इधर मेन कंटेंट है और इधर मेन कंटेंट है, टॉप पे और इधर लेफ्ट साइड पे, देन दे विल लाइक मोर बेनिफिशियल होगा. अगर जो तुम लोग के मेन सब डिटेल सपोज इधर है, इधर लाइक यू व्हाट यू पुट ना, कि डेट्स पुट करोगे, लोकेशंस पुट करोगे, ये सब स्लाइटली अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो वो सब अगर इस साइड डालोगे देन इट्स ओके. नाउ इवन फॉर टेक्निकल स्किल्स, जो तुम लोग के मेन स्किल्स है, जो बेस्ट स्किल्स है, वो एज यू कैन सी पहले डालना कि AIML DL, दोज आर माय मेन रिलेवेंट कोर्सेज, तो वो मैंने सबसे पहले डाला. पाइथन इज माय मेन रेलेवेंट कोर्स, तो वो इधर सबसे पहले डाला. टेंसरफ्लो, केरास, पाइटॉर्च, ये सबसे पहले डाला. CS50 इज बाय हार्वर्ड्स, वो पहले डाला. वो ये जो अचीवमेंट्स है, जो जितने अच्छे अचीवमेंट्स है, वो टॉप पे डालना, ऐसा. सो फॉर MBA पर्सपेक्टिव ये है. दिस ऑल्सो अप्लाइज टू MS पर्सपेक्टिव एज वेल, बट MBA के लिए स्पेसिफिकली ये इतना ही आई नो, सो इतना ही आई विल से. बाकी इफ एनीवन नोस देन दे कैन कंट्रीब्यूट. अभी रिसर्च प्रोफाइल के लिए, फ्रॉम व्हाट आई नोटिस एंड मोस्ट ऑफ योर रेस्यूमेस, लाइक जितने भी मैंने देखे ग्रुप पे जो हम लोग ने शेयर किए थे, कोई कोई लोग ने इधर गिटहब, लिंक्डइन ये सब डाला नहीं था, तो ये डाल देना. नंबर डाल देना, जीमेल डाल देना. लोकेशन नहीं डालोगे चलेगा, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कॉलेज का जो लोकेशन है वही लोकेशन है. लाइक आई थिंक फॉर मोस्ट ऑफ अस आई थिंक दैट्स केस. तो ट्वेल्थ का लोकेशन है, ट्वेल्थ का कॉलेज का लोकेशन है, एंड जो अंडरग्रेड है वो करंट लोकेशन भी वही है, तो फिर इट्स अंडरस्टूड कि मुंबई इंडिया से ही हो तुम लोग. सो वो इधर डालने की जरूरत नहीं है. अगर जो पब्लिकेशंस नहीं है, देन यू कैन पुट योर ब्लॉग्स या टेक्निकल राइटिंग. सो टेक्निकल राइटिंग करके सेक्शन करना, और उधर लाइक योर ब्लॉग्स वो सब आ जाएगा. एंड आई वुड हाईली एडवाइस कि अगर जो पेपर नहीं है, और पेपर ऑब्वियसली ये स्टेज पे नहीं होगा, तो फिर दो तीन ऐसे अच्छे वाले ब्लॉग्स लिख दो. एक ब्लॉग तो तुम लोग का ACM से हो ही गया होगा. अभी एक कोई प्रोजेक्ट करोगे ना, उसके ऊपर ब्लॉग लिख देना कि प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट किया, उसके ऊपर लाइक ये एनालिसिस में भी कुछ किया, या फिर ये मतलब ये प्रोजेक्ट में ये यूएसपी था, तो हम लोग को ये हम लोग ने ऐसे यूएसपी बनाया, उसके ऊपर एक ब्लॉग लिखा. अनदर ब्लॉग यू कैन राइट इज एनीथिंग लाइक रिलेटेड टू योर अचीवमेंट्स, कि ये हैकाथॉन विन है, तो हम लोग ने ये हैकाथॉन विन में ऐसे हम लोग जीते. सो that could be one of your blogs. ऐसे 2 to 3 blogs you can write instead of your research publications.
Now for the experience, as you can see, ये जो keywords है, fine tuning, developing, evaluated, built, composed, assigned, authored, devised, ये सब जो keywords है, use keywords like that. Like ऐसे मत बोलना कि भाई तीरथ like वो something very कोड बंद simple कर कि दे एंड पीडीएफ ही खोल दे, बेटर रहेगा। PDF दिखा दो। हाँ। Okay, so okay, दिख रहा? यस यस यस, न्यू हेलो, वर्जन वाला है राइट? यस। यस। सो इसमें सर्टेन चीजें बोल्ड करना, जैसे जो इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ बोल्ड मत करना, बिकॉज दैट डज नॉट लुक ग्रेट एज वेल। सर्टेन चीजें ही बोल्ड करना। अगर जो नंबर्स है, फॉर एग्जांपल 10, ये नंबर्स है उसको बोल्ड करना। स्पेसिफिक फीचर्स है कि ये मैंने किया तो उसको बोल्ड करना। स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कुछ यूज किया तो उसको बोल्ड करना। बाकी यस वही, अगर जो किधर, सो दिस इज अ फॉर्मेट आई प्रेफर कि इधर कंपनी नेम, हम लोग का जॉब रोल, द टाइम स्पैन एंड द लोकेशन, और हाइब्रिड है कि रिमोट है कि फिर ऑन, क्या बोलते हैं, ऑन साइट है। सो वो इधर लिख देना वैसे। And you can like write both research internships and technical internships together. If you want, you can write differently as well, but I think it consumes too much extra space to have a different header. इससे साथ में करोगे तो वो बेटर रहेगा। बाकी वही कि ये नंबर्स को ऐसे लिखना, स्पेसिफिक मॉडल्स अगर कुछ यूज किया तो वो लिख सकते हो। अ, बाकी और क्या बोलूँ, अ, अगर जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक लाइक ये मेरे मॉडल्स बनाए, व्यू के लिए बनाए, थेफ्ट डिटेक्शन के लिए बनाए, तो वो लिखना। यही, बाकी एक्सपीरियंस पे तो आई थिंक मोस्टली यही होना चाहिए। एक्स्ट्रा को करिकुलर में अगर जो तुम लोग के कुछ लीडरशिप पोजीशन है तो वो लिखना कि ओके 15+ स्टूडेंट्स या फिर डिजाइन टास्क ये सब किया है, तो ये सब लिख सकते हो। इधर भी नंबर्स आर ग्रेट वे टू शोकेस यूटिलिटी, कि अगर जो मेरे 15+ स्टूडेंट्स, 100+ वर्क आवर्स, like reduce, increase efficiency by 20%, reduce the cost, which like reduce the cost for a particular function by 50%. ये सब metrics अगर जो ऐसे metrics है, they are brilliant because they like ATS specifically scans for such numbers. So that's why you should use them. बाकी जो ट्रेंडिंग एआई कीवर्ड्स है, इफ यू आर बेस्ड इन एआई रिसर्च, तो वो भी यूज करना कि भाई इधर कस्टमाइज एआई जनरेटेड प्रॉम्प्ट्स, तो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के में भी ये कर दिया, फिर कोड क्वालिटी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, या फिर आइडेंटिफाइंग कैटेगराइजिंग बग्स। तो ये दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर लाइक स्पेसिफिक, लाइक व्हिच आर ट्रेंडी। अभी फॉर एग्जांपल अभी एमवीपी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट टेक क्या था, एमवीपी एमवीसी सर्वर जो बोलते हैं उसको, अगर जो दैट्स अ ट्रेंडिंग कीवर्ड, तो वो यू कैन MCP. इंक्लूड। एमसीपी, यस एमसीपी, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल आई थिंक। हाँ, सो उसको यू कैन इंक्लूड, फिर उसके ऊपर यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स। फिर क्योलो पे यू कैन बिल्ड प्रोजेक्ट्स, फिर एक्शन रिकग्निशन, दो आर पाइपलाइंस, एलएलएम्स, एसएलएम्स ऑब्वियसली, जीपीटी जेमिना, ये सब तो किधर ना किधर मेंशन कर ही देना अपने, लाइक लामा, जीपीटी, जेमिना, डीप सी, ये सब तो किधर ना किधर मेंशन कर ही देना, बिकॉज वो लाइक इट ट्रैक्स बेसिकली। तुम लोग के जो जॉब एप्लीकेशन होते हैं ना, उसमें जो जेडी दिया रहता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके दे लिंक दो जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बेसिस पे, स्पेशली इफ दे आर एआई एनेबल्ड रेज्यूमे स्कैनिंग टूल्स, तो फिर दे track to specific keywords from the short job descriptions itself. So if you are creating a CV for a particular application, for a particular job application, तो फिर I would highly advise कि job description से कोई कोई keywords उठा देना एंड अपने जो कंटेंट है, मे बी इन प्रोजेक्ट या एक्सपीरियंस, उधर डाल देना ऐसा। दैट्स वन टिप। बाकी हाँ, इधर वन अदर थिंग आई प्रेफर कि प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं इधर प्रोजेक्ट नेम लिखूं, और फिर इधर टेक स्टैक व्हिच आई यूज्ड इन द प्रोजेक्ट वो लिख दूं। इफ इट्स अ पेपर तो वो इन सबमिशन प्रिपरेशन ऐसे लिख दूं। और अगर जो तुम लोग के रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं है, बट दे आर इन प्रिपरेशन, सो यू कैन राइट देम इन, लाइक यू कैन राइट देम इन द टेक्निकल राइटिंग सेक्शन एज वेल, बिकॉज उधर since it's not published, like since you haven't published papers, like it's considered कि okay ये preparation है, so it's still considered कि ठीक है, इसने कुछ ना कुछ तो research work decent वाला किया। और venue if possible लिख देना if it's a decent venue,
अगर जो लाइक एकदम लोकल IEEE कॉन्फिडेंस है जो IPD सबमिट कर रहे हो तो वो भी मत लिखना वैसा। फिर हाँ, टेक्निकल स्किल्स जो कोर्स वर्क है वो मेंशन कर लेना, लैंग्वेजेस मेंशन करना, टूल्स मेंशन करना, टेक्नोलॉजीज कोर्सेज कुछ क्लियर है क्या, एंड कोडिंग प्रोफाइल्स ऑल्सो नोट की। ये जो मैंने भी जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन किए, ऑल ऑफ दीज आर लिंक्स, एवरीथिंग इज अ लिंक ओवर हियर, एवरीथिंग व्हिच इज अंडरलाइंड इज अ लिंक। सो सब कुछ मतलब ऐसे जितना लिंक कर सके उतना लिंक करना। नाउ आई नो कि मोस्टली वो लोग नहीं देखते हैं, बट स्टिल लाइक इट्स प्रेफरेबल कि अगर जो कोई सपोज मेंटी देख रहा है या फिर कोई प्रोफेसर देख रहा है, एंड इफ ही वांट्स टू लाइक सी द प्रोजेक्ट या सी व्हाट यू हैव डन इन अ पर्टिकुलर पेपर, दैट फॉर एग्जांपल पेपर पर सकता क्या है, उधर पेपर कोड डेमो जर्नल का इंफॉर्मेशन, इफ इट्स अंडर द वे बिकॉज यू कांट ऑब्वियसली गिव पेपर इंफॉर्मेशन बट यू कैन गिव जर्नल का इंफॉर्मेशन कि ओके ये डिसेंट जर्नल है, ये सब यू कैन प्रोवाइड लिंक्स ऐसा। बाकी हाँ, फिर अचीवमेंट्स में ऑब्वियसली नंबर्स डालना। GR स्कोर तो ऐसे ही मैंने डाल दिया, बट इफ यू वांट यू कैन लाइक राइट गेट स्कोर, GR स्कोर, ये सब, बट मेनली तो हैकाथॉन विंस एंड like those kind of stuff is more important. So वो सब डालना। Uh, okay, one thing I probably didn't do, but you can do is mention professor names as well. अगर जो कुछ रिसर्च इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर इवन IPD के लिए, अगर जो कोई प्रोफेसर का नाम है डॉक्टर किरण तो में क्लिक देना, it leads value to your project कि okay, some doctor, some experience, like some expert is collaborating with you and working on a certain project together. So that is also significant. बाकी यही मोस्टली, और तो कुछ ऐड करना है मेरी तेरे को रेस्यूमे में से कि तू अपने में से करेगा फिर? हाँ, मैं अपने में से कर लेता हूँ एंड ठीक देन है, वी तो कैन एक कॉल। एक हाँ, मिनट, मोस्टली अभी मेरा हो ही गया है एक अभी। अच्छा, तो तू पहले रेस्यूमे करेगा कि मैं शुभम को बोलूँ? अभी रिसर्च ही है तो मैं मेरा कंटिन्यू हाँ, कर तू दूँ। कर ले, तो फिर तू कर ले, मैं मेरा स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ओके, तू ही कर लेना मेरे पोर्टफोलियो में जाके, मेरे चल। को शेयर करना पड़ेगा फिर स्क्रीन रिकॉर्ड। हाँ, सीवी। सो ये मेरा रेज्यूमे। सो डरना मत, ठीक है? दिस इज अ PhD ऑप्टिमाइज रेज्यूमे। एंड मतलब कि ये प्रोफाइल बिल्डिंग मैंने बहुत अर्ली स्टार्ट किया था। इट वाज समवेयर अराउंड इन अगस्त 2024, August 2025, sorry. So it would be third year starting में किया था। So yeah, you have like 6 months to focus on what exactly you want to do in the future. ठीक है? सो थोड़ा जूम कर देना। सो एज तीरथ मेंशन, एकदम ऊपर ईमेल, लिंक्डइन, गिटहब, ऑर्किड इज फॉर रिसर्च, ठीक है? गूगल स्कॉलर एंड पोर्टफोलियो, तो गूगल स्कॉलर ऑर्किड दोनों रिसर्च फोकस्ड पे है, ठीक है? अगेन नेक्स्ट एक्सपीरियंसेस पे आ जाते हैं तो फिर मेरे सब बहुत सारे रिसर्च इंटर्नशिप्स हैं। बस एक ही टेक इंटर्नशिप है। डिप्लोमा मैंने किया था तो डिप्लोमा में भी इंटर्नशिप्स है। लाइक आई वाज अ गेम डेवलपर, आई वाज आल्सो अ डेटा एनालिस्ट एज वेल early on in my life. फिर I was also a full stack developer, Vue.js, Django पे काम किया था। But हाँ, those are not relevant to my end goal, right? मेरा end goal is PhD, and showcasing a PhD, showcasing a full stack developer or a game developer role in the resume, it just takes up space, right? So ऊपर जाना, first it is Georgia Tech and National Institute of Disaster Management, which is arguably the best experience which I have right now, because so for my format of the resume, मैंने लेफ्ट साइड पे सब कुछ रखा है कि की मेट्रिक्स है कि कहाँ पे मैंने किया है, एंड राइट साइड पे देर इज सम मेट्रिक्स कि वो इंटर्नशिप से क्या आउटपुट आया। सो यूरिप्स 2025, फिर EACL 2026, IGSMP, AACL। So anyone who wants to read my resume very quickly, if he only wants to see the achievements or the outcome which I produce from the experience, he only has to see to the right side. And if he wants to read the whole thing, he can read it left to right, right?
सो जॉर्जिया टेक एंड एनआईडीएम। फिर नेक्स्ट लाइन पे मैंने वो रिसर्च इंटरेस्ट लिया कि व्हाट प्रोजेक्ट आई वर्कड ऑन, जनरेटिव मॉडलिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड डैश करके आई मेंशनड द कोलैबोरेटर्स व्हिच वर देयर विथ मी। सो उनके ऊपर क्लिक करोगे सो उनके प्रोफाइल खुलेगा गूगल स्कॉलर के, राइट? Yeah, next is King's College, NUS, IIT Dhanbad, Jodhpur, AINP, Research Lab, IIT Patna. ये सब रिसर्च इंटर्नशिप्स ही है। देन कम्स इनफील्ड विच इज अ टेक इंटर्नशिप, सो उसके अंदर एआई एंड फास्ट एपीआई, एडब्ल्यूएस क्लाउड वो सब यूज किया था, तो दैट इज हाईली रिलेवेंट इन पीएचडी एज वेल, सो वो रखा हुआ है। इन फील्ड में फोर्ब्स टॉप 100 स्टार्टअप्स 2024, सो जब मैं था तभी ड्यू टू माय कंट्रीब्यूशंस वो फोर्ब्स टॉप 100 स्टार्टअप्स बना था, so that was one thing. Next in PhD, of course, publications matter करते, तो publications लिख दिए। So publications में भी हर एक publication का DOI रहता है, which is document object identifier. So वही है, first is the paper title and then is the venue where it got selected. So न्यूरिप्स है, EACL है, IJSNP AACL है। फर्स्ट इज ए स्टार कॉन्फ्रेंस, फिर ए कॉन्फ्रेंस है, देन IJSNP is a B conference. Scientometrics is a Q1 journal. Automated software engineering is again a Q2 journal. So फर्स्ट पेज पे मैंने वही पेपर्स रखे। आई वांटेड टू शो द डिवर्सिटी, लाइक आई कैन publish in Q1, Q2 journals both. I can publish in A star, A and B conference, all three. So I have the caliber to deliver all sort of कॉन्फ्रेंसेज एंड जर्नल पेपर्स। फिर नेक्स्ट पेज पे फिर Q2 जर्नल्स है, Q1 जर्नल्स है, Q1 जर्नल्स है। एज हियर यू कैन सी इन रिव्यू है पेपर, सो आई मेंशन कि इन रिव्यू में है, बट हाँ पेपर का कोड एंड डेटा इज रेडीली अवेलेबल। सो इन योर केस एज वेल, इफ यू वांट टू ऐड, इफ यू हैव डिसाइडेड योर रिसर्च टाइटल बेसिकली, अगर मैं एग्जांपल देने की बात बोलूँ तो फिर बहुत लोग आ गए राइटिंग फेज पे। देवांशी का आई कैन अंडरस्टैंड आर्ट कैट करके था। दूसरा किसी का पेपर टाइटल याद है मेरे को। anyone wants to speak up, they can also speak up. कोई पेपर टाइटल they have fixed in ACM research itself. आर्ट कैट एक याद आ रहा है मेरे को, अभी रिसेंट मीट हुआ था इसलिए। या एनीवन एल्स जिसका पेपर टाइटल हुआ है? Right. ओके ठीक है, नेवर माइंड। नेक्स्ट कम्स द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में अगेन आई गेस मैंने आज ही किसी का स्टोरी देखा, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा है, इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट। I believe it's Harshit who is making the project. So make some projects which have some sort of an impact. Like SiteSpy is a VS Code extension. So उसके अंदर downloads दिखेंगे, वो VS Code extension कितनी बार download हुआ. So it's a good metric. And universities, MSQ universities, they also ask for such a metric. Ki are you able to create some change in the world by using your software development skills or research skills etc. ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस आता है, फिर टीचिंग एक्सपीरियंस इज नथिंग, पीएचडी फोकस रहता है कि पीएचडी में टीचिंग रोल्स लेने पड़ते हैं, सो दैट इज वेयर टीचिंग एक्सपीरियंस कम्स इन। टेक्निकल स्किल्स, हाँ, in most of your resumes I don't see this point. One thing is कि तुमको जो स्किल सबसे ज्यादा आती है, you should place it the first. So Python is the go-to language which I use. So Python is first, then CUDA. CUDA क्यों? क्योंकि PhD में you use multi GPUs and they require the knowledge of CUDA, shell, latex. So PhD एप्लीकेशन के लिए Python, CUDA, shell, latex आना ही चाहिए वो PhD स्टूडेंट को, उसके बिना वो मतलब PhD के लिए रेडी नहीं है। देन कम C++, जावा, एसक्यूएल, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, वो नहीं आता है तो भी चलेगा। सो बट दीज फोर लैंग्वेजेस आर मेनली यूज्ड इन PhD. नेक्स्ट इज डेव टूल्स, लिनक्स, AWS, GCP, डॉकर, कुबरनेटिस, हगिंग फेस, ओवरलीव, गिटहब, ये सब PhD स्टूडेंट को आनी चाहिए। मेरे को और ज़्यादा डेव टूल्स भी आते हैं, बट स्टिकिंग टू द एंड गोल विच आई हैव, I'm writing only those skills which are relevant.
फ्रेमवर्क्स भी टेंसरफ्लो, टॉर्च, फास्टिफाई, फ्लास्क ये सब इम्पोर्टेंट ही है इन रिसर्च, ठीक है, टू शोकेस योर मॉडल्स एक्सेट्रा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, रिसर्च हेड है एट ACM। अभी मेंटर हूँ बट या आई कैन राइट हेड स्लैश मेंटर एज वेल। एंड डिटेल्स भी है, डिटेल्स में DGS ACM का वेबसाइट है, सो anyone who wants to see कि मैंने exactly क्या काम किया then they can go to the DGS ACM का website. And student volunteer, so this is a very good achievement which I have for extracurricular. दुनिया में बस दुनिया में से सिर्फ 10 लोग सिलेक्ट हुए थे, $500 मिले थे मेरे को towards conference, and it's a good achievement to have overall. So volunteer select होना is मतलब कि 15 स्टूडेंट्स में से एक होना is very good stuff. So हाँ उसके भी डिटेल्स लिखे हैं। एंड एजुकेशन, एजुकेशन इज माय वर्स्ट थिंग इन माय पोर्टफोलियो, इसलिए मैंने लास्ट रखा है। बट या इफ एजुकेशन इज अ गुड थिंग इन योर रेज्यूमे देन यू शुड पुट इट एट द टॉप, ठीक है। Any questions you have regarding my and Tirat's resume with regards to research only? So हमने दोनों टाइप के कवर कर दिए, मास्टर्स का रिसर्च एज वेल एज PhD का रिसर्च। PhD का रिसर्च माइन इज मच मोर रिगरस और माइन इज मच मोर एडवांस्ड बिकॉज PhD के लिए like you are competing against the world for one supervisor. एक supervisor के पास almost 60-70 applicants आते हैं and he only has to select only 2 or 3 PhD students. So that is 2 by 1 in 30 chance. Whereas masters, of course acceptance rate कम होता है, but the acceptance rate कम क्यों होता है क्योंकि नल्ले लोग भी अप्लाई कर देते हैं CMU में, ठीक है। Yes. हाँ, Like, Ritviraj for can explain example, better. Ritviraj can for explain better. masters, for example, if there are like 1,000 plus applicants, उसमें से 200 plus applicants ने तो like अपना like 8 CGPA रहेगा या फिर ऐसे एकदम ही SOP में कुछ भी लिखा रहेगा वैसे रहता है। नाउ दी कोर जो ऐसे 500 ही रहते होंगे बट उसमें से like 100 get selected. So the path size is a lot bigger than say a PhD group. Like PhD group में max 2-3 select होते हैं and that also depends on funding. अभी PhD में since PhD requires external funding because like the university has to pay the student, unlike MS, which like is considered cash cow because the student pays a university a huge amount. So as you say, the competition like changes drastically. Also, like most like top tier college students, like from IITs or from uh, Harvard, yeah, MIT, they directly do PhD from their undergrad. Like it's very rare for the top tier university candidate to go from undergrad, then masters, then PhD because masters का उतना वैल्यू ही नहीं रहता है उन लोग को। लाइक वो अगर जो मास्टर्स करेंगे तो फिर वो ऐसा करेंगे कि PhD के बीच में चलो एक मास्टर्स मिल गया वैसा। For us, like from T3 colleges, if we want to stand a chance, like if we are not being hit Panchal, then if you want to stand a chance to get admit at a top tier university ka PhD, then we need to have a MS at a top tier university. Which if wo mil gaya, then it becomes much easier to get a PhD. वैसा. So that's why you can see like there's a huge difference between MS applicants and PhD applicants, and that's why I showcase मेरा resume पहले because it's certainly more relatable than इसका resume. Yeah, So and PhD के लिए I am competing directly from BTech to PhD, which is बहुत कम लोग करते हैं and जो मेरे competition में हो उन्होंने पहले मास्टर्स कर दिया है। So वही like और 60 I में से भी मतलब कि इंटरव्यू भी बहुत कम लोग को आता है, ठीक है। चांस टू इंटरव्यू एज वेल, मेरे को कितने मेरे 3 इंटरव्यूज हो गए PhD में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू इंटरव्यू एज वेल, स्टेज एज वेल, क्योंकि इंटरव्यू like एक I've बार क्लियर heard हो गया देन यू आर गारंटीड इनटू द प्रोग्राम। like I would say there are certain if you are a Reddit person, then there are certain subreddits like MSCS and grad admissions. You can just look at some of the profiles there and अभी currently अभी तो देखोगे तो एकदम ही डिप्रेशन होगा because like you will see कि NUS वाले बंदों ने जिसने 30 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उन लोग को भी एक इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया है। सो अभी तो एकदम डिप्रेसिंग माहौल है उधर बट यू कैन लाइक
उससे यू कैन असर्टेन कि कैसा कंपटीशन है। नाउ होपफुली तुम लोग के साल थोड़ा इजियर होगा बिकॉज फंडिंग ज्यादा रहेगा। अभी करंटली फंडिंग का भी बहुत इशू है, इसलिए बहुत सारी न्यू यूएस यूनिवर्सिटीज ने तो लाइक पीएचडी पोजिशंस रखे ही नहीं है। लाइक यूजुअली अगर 2 to 3 पोजिशंस रखते हैं, वो लोग ने इस बार रखे ही नहीं है। सो होपफुली वो तुम लोग के टाइम तक तो वो इशू मेरे हिसाब से चला जाएगा। बट लाइक आई एम जस्ट टीचिंग कि वो पीएचडी में कितना कॉम्पिटिशन होता है और एमएस में कितना कॉम्पिटिशन होता है। ह्यूज डिफरेंस। या सो दिस वाज रिसर्च रिलेटेड। रिसर्च और रिलेटेड अगर जो डाउट है तो फिर वो बाद में पहले पहले एक बार इंडस्ट्री का देख ही लेते हैं बिकॉज इंडस्ट्री का काफी शुभम को लेट। बुला लेते हाँ, हैं। शुभम um, आया है मीट में। um, कोई देखो भाई, अच्छा नहीं देखो क्या। मेरे को एक और पॉइंट रखना है तुम लोग के ऊपर कि ये मैं मास्टर्स बुलाता तो हूँ तब तक। करना ही है तुम लोग को। ठीक है, स्टार्ट मेकिंग योर प्रोफाइल राइट नाउ। ठीक है, स्टार्ट अर्ली। ठीक है, मेरा भी रिसर्च इंटर्नशिप मेरे को दिसंबर 2023 में लग गया था, विच इज फॉर यू गाइस इज दिसंबर 2025। सो यू आर जस्ट 2 months अवे। ठीक है, मेरा भी रिसर्च इंटर्नशिप लग गया था। आई वेस्टेड 6 months। सो 6 months हो गया, तो फिर मई तक यू हैव टू फाइंड अ गुड रिसर्च इंटर्नशिप टू एटलीस्ट स्टैंड अ चांस at comparing my yourself with me for a PhD program, or with if you want to compare yourself with Tirath as well for masters in research related programs, you need to get a research internship before Tirath. When was your join date? October, right? मैंने हाँ सितंबर अक्टूबर। सो रिसर्च इंटर्नशिप जो किया था वो सितंबर अक्टूबर में किया था। रिसर्च असिस्टेंटशिप जो यूआईयूसी में किया था दैट वाज जून जुलाई। And this is like between second year and third year का summer break वैसा। So like for sem 4 sem 5 I would say that's the optimal time to join a research internship because you need to get up to speed with the research group as well। like उसमें भी थोड़ा time लगता है, especially if you're not uh, like especially if you don't know the exact tech domain of the research group, then वो थोड़ा एक तो speed up होने को like 1 to 2 months लगता है, and फिर like you start actually contributing to the research effort। तो उसमें फिर like वैसे टाइम लगता है। So that's why it's best to start early in sem 4 sem 5। And it's relatively easy to get research internships in a tech. इंडियन यूनिवर्सिटीज में तो easily मिल सकता है। सिर्फ as I said again, डीएम करो, कोल्ड ईमेल करो, लिंक्डइन पे भी मैसेज करो। यू कैन आस्क मिस्टर ऋषिकर, he is an expert in this। वो तुम लोग को एग्जैक्ट बता देगा कि कोल्ड मेल कैसे करना है। आई थिंक ही गॉट 2 internship using कोल्ड मेल, राइट? आईटी मांडी एंड आईटी पटना, दोनों इंटर्नशिप उसको कोल्ड मेलिंग से ही मिला। एंड ही वॉज एट योर स्टेज ओनली। आई थिंक ही वॉज स्पेसिफिकली अभी जो तुम लोग को करंट स्टेज उस पे ही था वो, एंड उसको रिजल्ट इंटर्नशिप मिल गया था। सो उसको लाइक यू कैन टारगेट एंड आस्क। बाकी वही कि कोल्ड मेल करो, कोल्ड डीएम करो। एंड टेम्पलेट्स भी आई थिंक वी हैव शेयर्ड विथ यू। हैव वी शेयर्ड विथ देम की टेम्पलेट्स? Yeah, yeah. आई थिंक भेजा था ना हाँ शायद, हाँ। किया था ना, गोल्ड मेल का सचिन भी लिया था। वही, सो तभी वी कैन रेफर दैट लाइक to know how to craft your name। Looking at your personal groups जहाँ पे तुम लोग ने रैंक किया है सभी चीज, I can see a heavy bias towards projects and tech internships। ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स के लिए मेक अ गुड प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑफ कोर्स तुम लोग एआई यूज करोगे, इट्स नो मतलब कि कंस्ट्रेंट नहीं कर रहा हूँ कि एआई मत यूज करो, बट इफ यू if even if you are using AI, just make sure that whatever you build, it doesn't rot in a GitHub repository. It should be actively used by someone। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स दिए थे लाइक वीएस कोड एक्सटेंशन बना सकते हो, या तो फिर पाइपिया पैकेज बना सकते हो, या तो फिर वन गुड एग्जांपल इफ आई वांटेड टू गिव, हर्षित अभी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रहा है। Harshit, you can give good project examples which you are building if you are comfortable sharing with. लाइक अभी जो एक्सटेंशन है उसके पहले लाइक मैंने एक अच्छा वाला जो बनाया दैट वाज ऐसा विंडोज का डेस्कटॉप वाला, हाँ वो मस्त था, Desktop वो वो वाला। मस्त था, मैंने विजेट्स भी लिंक्डइन पे देखा था। दैट विजेट्स बनाए थे लाइक
सो वो वर्जन 1 इज नॉट लाइक डिप्लॉयबल लाइक प्रॉपर यूज के लिए, बट लाइक या उसका वर्जन 2 में इट कैन बी एक्चुअली यूज्ड एज अ प्रोडक्ट। लाइक अभी के लिए उसमें सिर्फ क्लॉक, वेदर और सिस्टम डिटेल्स वो सब है, बट आगे जाके उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लाइक ओरिजिनल आइडिया तो वही था कि उसको एज अ प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट अभी के लिए तो एज अ, फिलहाल के लिए वर्जन 1 तो एज अ नॉर्मल EXE फाइल ही है। Just make sure ठीक है। that एंड एक्सटेंशन में भी जो एक बना रहा हूँ अभी वो एज अ प्रैक्टिस है, वो उतना कुछ वो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट उसके बाद वाला जो है दैट इज लाइक एक्चुअल इम्पैक्ट वाला। keep it up. So the main point was कि you should create some high impact projects जो कोई use कर सके when you will deploy you will get the statistics as well, right? कि कोई कितने लोग ने download किया, how many lives you have changed, etc etc. तो वो metric दिखना चाहिए in your resume. If not that, then you can have something like um, a hackathon win as a metric कि project अच्छा है because this project won a hackathon. Right. So either make something which is very popular or make something which is impactful and presentable in a hackathon, or something which I've noticed gets selected for internships या फिर क्या बोलते हैं industry applications like from my group, जो UBS, Morgan Stanley and Google वाले जो select हुए थे team में technically complex projects. So if you make something which is like technically complex की interview के time can directly like screen share करके दिखा सकता है. More importantly, you can explain कि exactly तूने ये step पे ये decision क्यों लिया. If you can explain that in an interview, then you're sorted. Like फिर इतना वो popularity and all that's great, but popularity में it's great for passing the first round. In the actual interview round, you might like need to explain technically complex stuff as well. Because फिर क्या होता है फिर वो and why this is a good way because you can actually capture the attention of the interviewer कि मेरे को यही tech stack में तू मेरे को पूछ अभी. Suppose you have built a project using Next.js and ये सब basic जो web development के technology है वही, but you have made something which is like complex, ये कुछ source map resolution या फिर वैसा कुछ कर लिया. सो फिर वो जो इंटरव्यूअर है सिंस इज लाइक मेनली तेरी प्रोजेक्ट के बारे में जानता है तो वो इसके बारे में ही मोस्टली पूछेगा वैसा. So, like, still you can like hone down on a particular technical interest because what Fang and other top companies want now, they don't want like ये मतलब को ये particular subdomain में technical knowledge चाहिए ऐसा. They want general problem solving skills. That's why they value CP and DSA so much. Because in Fang, in your initial months at least, there will be a training period or learning period. For the UBS people, they have to code in Java, like production systems in Java. Now, I don't think any one of us has done any production system coding in Java for except the Java post which we did in Sem 2. उसके अलावा हम लोग ने ऐसा वेब एप्लीकेशन या ऐसा कुछ तो कुछ किया ही नहीं रहेगा. And even those with internships I'm saying. So for them, they don't see कि तुम लोग को जावा आता है कि नहीं, they see कि तुम लोग को ये टेक्निकल स्किल आता है कि नहीं, ये टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन के इंटरफेसेस आता है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्शन आता है कि नहीं, एनकैप्सुलेशन आता है कि नहीं, in any language, and whether you can apply those same skills in their in the company's tech domain basically. So yeah, that's what you have to showcase using your resume and in the interviews as well. Yeah. Yeah. And tech internships तो basically तुम लोग को resume बनाओगे तो ही तुम apply करोगे and तो ही तुम लोग को internships देगी. तो tech internships अगर मिलना है मिलना चाहिए तुम लोग को तो उसके लिए basic resume तुम लोग के हाथ में होना चाहिए. Okay. Yeah, we will just bring on Shubham. Shubham. रुक जा वो उसका है ना थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ रहा है. Okay. हम्म. Till तब तक और then, कुछ हाँ Q&A वो कुछ करना है तो वो कर लेते हैं एक बार. आई थिंक ही सेड anyone कि who 12 is AM तक में भी कुछ होगा. volunteering Volunteering for any resume not stream. criticism but tips. यार रोस्ट मत बोल भाई, रोस्ट बोलेगा तो फिर कैसे आएगा. Okay. If you want it individual as well, so just ping on the group. Individual तो करेंगे ही but we'll do that later. But if we can like have 1 or 2 brave people who will like showcase it on their अभी meet में
then like it's something which will help everyone because अभी जो तुम लोग के पास resume रहेगा वो ही सबके पास रहेगा, like वो ही स्टेज पे रहेगा सबके पास. So जो मैं टिप्स अभी तुम लोग को, मैं और मीर जो टिप्स तुम लोग को अभी बोलेंगे, that will be applicable to everyone. The issue with like presenting our resumes was that slightly कि since we are at such an advanced stage, कितना हम लोग ने फाइन ट्यून किया resume को कि अभी वो मे बी तुम लोग इतना रिलेट नहीं कर पाओगे, इसलिए like that's why I'm saying कि अगर जो कुछ कोई बंदा बोल पाए then it would be great. वही था Do you जो all है. have a resume from 2 years ago? Updated would be Okay. better, नहीं but नहीं, हाँ, I think you can share it. I think she asked a different question, कुछ और पूछा, right? No, no, you said that your current resumes aren't very relatable for us. So I was just asking if you had a resume which you all made 2 years ago or something. Okay. मिहिर मेरे पास करंटली अवेलेबल रहेगा, मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ेगा इसलिए. That's No, it. like if you all can just send it on the group, like whenever you find it. नहीं नहीं, we have to pass some time currently अभी जब तक वो शुभम आता है. So if anyone else is not volunteering फिर ये we can't do. और क्या still Uh, अगर जो कोई और maybe volunteer. 2 years ago, in field वाला है, so that is June. June हाँ, हाँ, तू हाँ, स्क्रीन शेयर कर सकता है तो कर दे या फिर मैं करूँ. अच्छा तेरे को ही कोई करना कर पड़ेगा. नहीं मैं कैसे, अच्छा तूने भेजा. पाएगा सर. क्या हुआ. हाँ, you can share screen. ओके मैं मेरा स्क्रीन शेयर करूँ, राइट. ओके. मेरा किधर भेजा तू ना. सर. ओके. Yeah, this is 2 years ago. Yeah, Tilak, you can roast me. सो सबसे पहले तो एज यू कैन सी ये जो लाइन है वो नहीं होनी चाहिए इधर. ये जो ऐसे लाइक जो ओवरफ्लो हो रहा है बेसिकली इधर, वो ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी लेजिबल कि ओके ये लिंक्डइन है, तो इधर बेसिक एक लाइन के अंदर सब कुछ आ जाना चाहिए वैसा. समरी इज ऑनेस्टली नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट इवन सीन बाय मोस्ट पीपल. एक समरी कोई पढ़ता भी नहीं है. सो आई वुड से रिमूव दैट सेक्शन एज वेल. एजुकेशन ऊपर रखो, ये बहुत सारे लाइंस तुम लोग यूज कर रहे हो इधर, लाइक ही वाज यूजिंग रेलेवेंट कोर्स वर्क, दो लाइंस लाइक अलग अलग यूज करने से अच्छा इट्स बेटर टू कीप वन लाइन एंड द टेक्निकल skills domain. So technical skills section तो वो एक करना चाहिए. CCP is okay. This everything over here is okay. Graduating लिखने की जरूरत नहीं है because what ATS does is that it scans सीधा dates. Like वो fixed format है as I said कि वो स्क्रीनर का वो fixed format देखता है. So इधर अगर जो तुम लोग ऐसे ग्रेजुएटिंग लिखोगे so it might get confused. So it's better to like just write the actual SIF date लिखना ही बेस्ट रहेगा. Technical skills again I don't think it's that important of a section कि इधर ऊपर रखना चाहिए, especially if like his experience already is so good. Then ये इधर रखने की जरूरत है ही नहीं. Technical skills एकदम लास्ट में होना चाहिए. Experience में ये जो है, okay, this is one major flaw in most of your प्लसनेस. ये ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वन लाइन और फिर इधर सेकंड लाइन पे इधर दो शब्द ऐसे आ गए. आइदर यू कैन डू इज कीप ये कंडेंस करके वन लाइन में ही कर दो, या फिर सेकंड लाइन में कर ही रहे हो 1.5 लाइन से ज्यादा करो. लाइक इफ यू सॉ ऑल ऑफ लाइक मी एंड these recent resumes तो फिर वो मोस्टली ऐसे ही रहेगा कि 1.5 लाइन से ज्यादा रहेगा या फिर ये एक फुल लाइन रहेगा. सो दिस लाइक ये पूरा जो तुम लोग का इतना स्पेस है बेसिकली, इतना ये पूरा स्पेस है वो खाली चला गया. दैट्स व्हाई दैट्स नॉट गुड. सो वो हटा देना. ये ऐसे ऐसे रिसर्च इंटर्नशिप लाइक दिस कोलन इज नॉट अ वेरी गुड एटीएस relevant punctuation as well. तो या तो इधर वो क्या बोलते हैं वर्टिकल बार डाल लेना, या फिर as we have done in our recent resumes वो इधर ऐसे नीचे डाल देना. लाइक इधर लाइक सपोज इधर कंपनी, इधर फिर रोल एंड देन इधर लाइक the other details like location and date. So वो that's another stuff.
ऑल्सो जो टेक स्टैक यूज कर रहे हो इट्स लाइक मच प्रेफर कि तुम लोग इधर लाइक इधर ही डाल दो लाइक rather than writing it over here. So that's another thing. Like ऐसे ब्रैकेट्स में लिखेंगे तो फिर ये एक तो रिपीट होगा, यू कैन सी पाइथन रिपीट हो रहा है, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। पाइथन इधर ही आ जाएगा। अगर जो पाइथन कॉमा ए आई, पाइथन कॉमा ए आई कॉमा डीप लर्निंग इधर आता तो फिर उधर ही सब कुछ पता चल जाता कि इसने ये इंटर्नशिप में पाइथन पे काम किया, इसने ये वाला इंटर्नशिप पे जेएस पे काम किया, इसने ये वाला इंटर्नशिप पे एनालिटिक्स किया, कि पावर बीआई पे काम किया, सो वो इससे सीधा पता चल जाता है। सो दैट्स अनदर फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में इट्स मोस्टली गुड। ये जो लिंक्स है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये गिटहब मार्केट प्लेस इज अ लिंक। सो या तो इसको कुछ अंडरलाइन करो या फिर इसके बाजू में कुछ लोगो लिखो या फिर ऐसा कुछ करो, बट लाइक पीपल शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज अ लिंक। ये तो इधर मैं इसको स्क्रॉल किया तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये लिंक है, बट ऐसे मेरे को नॉर्मली समझ में नहीं आता। तो फिर वो दैट्स वन क्रिटिक। बाकी ये जो there's a lot of inconsistent spacing, so वो रिमूव करना कि इधर फॉर एग्जांपल ये इतना बहुत ही कम स्पेस है इधर, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर ये देखो, ये इधर ये स्पेसिंग दिस इज इशू, सो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी ठीक है, लाइक बाकी एवरीथिंग एल्स इज ओके एंड एवरीथिंग एल्स इज फाइन। ये थोड़े ऑब्वियसली ये मैं बोलूंगा कि नंबर्स डालो, ये क्रिएटेड एज अ वेरी वेग एक्शन वर्ब, you should use more क्रिएटिव एक्शन वर्ड्स सच एज फाइन ट्यून्ड या फिर evaluated या फिर ऐसे सब, लाइक क्रिएटेड इज अ वेरी वीक वर्ड, वैसे वर्ड्स मत यूज करना। एंड अगेन बोल्ड कर सकते हो तो बोल्ड कर देना, एंड नंबर्स यूज करना, नंबर्स को बोल्ड करना। या आई थिंक दैट्स probably all of that was। और कुछ है मिहिर? अच्छा हाँ, और अगेन एज एज यू से एज यू सॉ, मैंने फर्स्ट पेज पे ही नोटिस किया, मैंने दूसरा पेज देखा ही नहीं। दिस इज एग्जैक्टली मैंने देखा ही नहीं सर, लाइक दिस इज a very realistic portrayal of how actual industry screeners would work if there is a human evaluating your resume, which is like quite rare nowadays. But अगर जो second round में पूछे, like there's some companies में ऐसा होता है कि first round में maybe automated screening होगा, second round में human screening होगा, like especially in Google I think there's something called as a phone interview, या I think मेरा भी हुआ था। So इसमें they tell you to give links to your CV, to your computer programming profiles. So इसके बेसिस पे they decide कि एक तो तुम लोग के फोन पे क्या कम्युनिकेशन स्किल्स है, एंड वेदर लाइक तुम लोग ऑन द स्पॉट ये सब बता सकते हो क्या, लाइक रेज्यूमे और वो सब कैसा है। सो वो नोट डाउन करना कि इधर वन पेज ही होना चाहिए बेसिकली। अभी सेकंड पेज पे ये देखो, ये स्पेसिंग इज वेरी बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब कंसिस्टेंट स्पेसिंग रखो। You can use this certain commands called as slash v space, which is like the bread and butter I think of any latex writer। slash v space से इधर थोड़ा you can introduce spaces। बाकी वो ये इधर links नहीं होना चाहिए, this is bad because ये पूरा तुम लोग का स्पेस खाली जा रहा है। other work experience is a very bad सेक्शन टाइटल, लाइक इधर ओपन सोर्स डेवलपर वो इसलिए लिख सकता था तो वो लिखना चाहिए था। यूज वन डेट फॉर्मेट, इधर ये डेट फॉर्मेट, इधर ये अलग डेट फॉर्मेट है, इधर ये अलग डेट फॉर्मेट है, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही डेट फॉर्मेट होना चाहिए। ट्राई टू यूज फर्स्ट थ्री वर्ड्स ऑफ द मंथ एंड देन द ईयर, सो दैट इज द स्टैंडर्ड एटीएस फॉर्मेट, सो वो यूज करना। लोकेशन अगेन इधर नहीं होना चाहिए, इधर कोई नहीं देखता है लोकेशन, लोकेशन शुड बी आइदर इन ईयर, और लोकेशन इज irrelevant other than this, so वो you can either omit or keep it over like in this below the date ऐसा। uh, बाकी publications, like if you are applying to publications, ये this link is not very valid, इधर DOI लिख दो या फिर लिंक कैसे करके लिखो, नंबर लिख के कुछ फायदा नहीं है। नंबर से वो कुछ कोई देखने ही नहीं वाला है, और अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिंक है, देखिए मेरे को नंबर ही लग रहा है, तो मैं अगर जो ऐसे ही मैं अगर जब इसमें देख रहा था तो सीधा से नंबर टाइप करने को तो कोई नहीं बैठता, तो सीधा इसको बस स्किप कर देता। सो दैट्स नॉट ग्रेट। बाकी क्या है, आई ट्रिपल पब्लिकेशन ऐसे लाइक अगेन द डेट इधर है इसमें, सो ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर जो तुम लोग डेट लिख रहे हो सब राइट साइड पे, तो इधर एक लेफ्ट साइड पे डेट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स अनदर फॉल्ट। अगेन टेक्स्ट स्टैक इधर नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट नेमिंग होना चाहिए। अगर जो गिटहब यूज कर रहे हो तो गिटहब का GIT H कैपिटल वैसे ही यूज करना, लाइक डोंट यूज एच स्मॉल, आई थिंक इधर तो मैंने एच स्मॉल वाला भी पढ़ा था। हाँ बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज ओके।
सो ये लाइक इतने सारे देखो, इतने लाइक आई डोंट नो 5 मिनट्स में इतने सारे क्रिटिक बोल दिया मैंने. सो एंड लाइक दिस इज नॉट मेंट टू लाइक insult someone या फिर be harsh. Like this is meant to purely meant to educate you कि ये इधर ऐसा नहीं होना चाहिए, इधर ये इसकी वजह से तुम लोग का रेसमे कट जाएगा बेसिकली. जो क्योंकि फॉर बिग कंपनीज एज आई सेड 1,000 एप्लीकेंट्स है. अब इसमें से अगर जो देखो 100 चूज करने रह गए, लाइक ऐसी लाइक थिंक फ्रॉम द इंटरव्यूअर पर्सपेक्टिव. इफ यू हैव टू चूज 100 कैंडिडेट्स ऑफ 1,000 और एक बंदे का ऐसा फॉर्मेटिंग ही सही है तो उसको तो मैं सीधा ही निकाल दूंगा, राइट? So that's why formatting is a basic necessity जो हम लोग का फिक्शन होना ही चाहिए. बाकी कंटेंट फिर वो मैटर करता ही है, बट फॉर्मेटिंग पहले अच्छे से करो. ओके, Yes, yes. any other questions, doubts? हाँ, डाउट्स पहले बोल, ऐसे कुछ रहेगा तो शुभम, पूछता हूँ, मैसेज देखता हूँ. एक मिनट. उसका नेट का भी इशू चल रहा है ब्रो. उसका बाद में लेना है क्या? अभी सी. ओके, दिस आई डोंट नो वेदर दिस शुड बी सेड और नॉट. मतलब फिर भी मैं बोल देता हूँ. Shubham is one of the certain cases ki like coming from nothing but achieving everything वैसा. So never fault, never give the fault कि मेरा प्रोफाइल सिलेक्ट नहीं हुआ तो कंपनी से ऐसा कुछ. Always like it's always your fault. So हमेशा खुद पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना कि मेरा प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं था इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ. आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ. एंड लाइक कुछ भी अगर जो डिफिकल्टीज हो या फिर ऐसा कुछ हो, सो डोंट like fault the system, like try to improve yourself. So yeah, like since he has worked so hard, like he started coding in first semester. Like मेरे साथ उसने CPP and Java. CPP तो उसने लाइक कॉलेज स्टार्ट होने के पहले सीखा था. एंड लाइक मैंने CS50 सीखा था बिकॉज लाइक दी हार्वर्ड कोर्स, एंड उसने CPP सीखा था बिकॉज ही वांटेड CPP C++. सो उसने वो सीखा था बिकॉज ही वांटेड टू डू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. एंड लाइक तब से उसने उसका DSA एंड कंप्यूटर प्रोग्राम का जर्नी स्टार्ट किया. तो फिर उसको लाइक इतने सारे कॉन्टेस्ट विंस हुए, लाइक 30K जीता, 15K जीता, ICPC में टॉप 100 AIR ऑल इंडिया रैंक हुआ. लाइक इफ यू नोटिस लाइक वन ऑफ दी लिंक्डइन पोस्ट, अभी आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम, वीवर या वीवम या ऐसा कुछ, बट he ranked sixth in ICPC regional out of लाइक ऑल ओवर इंडिया. लाइक बाकी सब उसके देखे गए IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद वैसा, बट एक था DJ सांगवी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट्स ऑलवेज पॉसिबल टू बेटर योरसेल्फ. एंड ऐसा नहीं था कि यू कैन like it's too late ऐसा भी नहीं है. Like one of my friends Siddharth who has got into UBS, he didn't have a single internship at your stage अभी तक. उसका सेम 6 तक एक भी इंटर्नशिप नहीं था. उसका सेम 6 तक एक भी लाइक उसको जो एक इंटर्नशिप मिला था सेम 6 के ब्रेक वाला गोदरेज में, उसको उसको नेटवर्किंग से मिला था. सो नेटवर्किंग मतलब समझ लो ना, कनेक्शन से. फिर भी उसको उसी के 1 मंथ बाद UBS में लगा 19 LPA, like which is one of the highest. And Abhi, if you compare the journeys of Siddharth and Bharat, which is another one of our friends, उसने internship किया था first year से. So see the डिफरेंस कि एक बंदे ने सिक्स सेमेस्टर में फर्स्ट इंटर्नशिप किया, एक बंदे ने फर्स्ट सेमेस्टर में उसका फर्स्ट इंटर्नशिप किया था, फिर भी उन लोग को सेम जॉब सेम कंपनी लगा UBS. सो इट्स नेवर टू लेट. यू कैन ऑलवेज बिगिन राइट नाउ. एंड you have to begin right now, I would say, if you want to get a good role and good company. अगर जो because it's as you said वो टाइमलाइन के हिसाब से रिसर्च इंटर्नशिप के लिए बेस्ट टाइम इज दी सेमेस्टर 4 एंड सेमेस्टर 5. Yeah, one सो more ये thing is कि सबके अलग अलग जर्नीज है, सबके अलग अलग प्रायोरिटीज है, ठीक है. सो डोंट कंपेयर विथ वन अनदर. Like for यस. me, मेरा main focus was research internships and research papers, and I just focused on that, and उसके वजह से अभी इतना strong profile हो गया for PhD. Looking at my end goal, research के Like लिए me, it like was a Mihir was clear from I think डिप्लोमा. वो डिप्लोमा से ही सोच रहा था आई थिंक रिसर्च का. सो सब सोचो कि वो 11th 12th से मतलब अप्रोक्सीमेटली सोच रहा था कि भाई उसको रिसर्च मतलब ऐसे ही करना है. सो तब yeah. से उसको क्लैरिटी था.
मेरे को क्लैरिटी था फर्स्ट ईयर, लाइक फर्स्ट सेम टू सेम थ्री साइड से, कि तब से आई थॉट कि मेरे को मास्टर्स करना है। एंड इट्स ऑलवेज बेस्ट टू सेट योर फोकस अर्ली, बिकॉज इफ यू लाइक set your focus and goals early, then it's like much easier to achieve them, because like you can create a plan basically. I'm a huge believer in plans. So अगर जो तुम लोग का प्लान बना रहेगा कि सेमेस्टर 7 में मेरे को एमएस एप्लीकेशन करना है, या फिर 2 साल बाद मेरे को एमएस एप्लीकेशन करना है, तो अभी मेरे लिए मेरे को क्या चाहिए रहेगा। Like even currently अभी मैं बोलता हूँ कि in my stage for MS applications, like for summer 27 internships, जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैं कॉलेज लाइक एमएस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, उसके पहले हम उस जब चालू रहेगा बिगिनिंग में ही कंपनीज आने लगेगा। सो अभी से मैं प्रेप कर रहा हूँ फॉर समर 27 के एप्लीकेशन। लाइक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अभी से मैंने थोड़ा बहुत चालू कर दिया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उतना थोड़ा मतलब फ्यूचर विजन होना चाहिए तुम लोग का। दैट्स व्हाई लाइक वी टुक दिस सेशन एज वेल, कि वो थोड़ा विजन तुम लोग का थोड़ा क्लैरिफाई हो। हाउ यू कैन गेट ओवरवेल्म्ड, बट इट्स better to get overwhelmed right now in semester 4 rather than get overwhelmed in semester 7, like which a lot of my batchmates did, and which like they switched their focus from initiate MS to placement on फिर MS, and फिर उन लोग का placement भी नहीं लगा and MS का भी रह गया। So वैसे वैसे मत करना basically. That's what we want to avoid for you. Yeah, Shubham is also right here. आगे। Just completing the sentence, मतलब तीरथ जो बोल रहा था, तीरथ को भी he got understand कि masters करना है, so he focused on tech internships and research internships both वैसे करके। शुभम का अगर बोलो, शुभम ही अभी आया तो he was very much focused on DSA only DSA। एंड मतलब मैं बोलूँ तो फिर शुभम, सिद्धांत और यश तीनों मतलब कि तीनों डीएसए ही करते थे पूरा दिन। ठीक है, लैब में करते थे भाई। लैब में करते, फोन पे So, भी करते थे। ठीक है। फोन पे तो ओके। लाइक एक टाइम था जब भी मैं तो ट्रेन में जाते वक्त and आते वक्त लेट को डेली करता था। एंड मतलब वैसे भी टाइम था। सो यू कैन कंसिडर कि वो लेवल का अभी हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड। अभी आई थिंक शुभम कैन टेक ओवर, अगर जो आ गया तो। शुभम रेडी है तो। हेलो शुभम। हाँ तो क्या है भाई, आ गया भाई, आ गया आ हाँ गया। वो इधर ही हूँ, आ गया अभी। तेरा अगर जो रेसिपी तू शेयर नहीं कर पाएगा तो मैं इधर से कर देता हूँ, जो तूने शेयर किया रहेगा तो। हाँ शेयर कर देता हूँ मैं, तेरे को भेज दूँ क्या? हाँ मेरे को भेज दे, मैं शेयर करता हूँ, फिर तू एक्सप्लेन कर दे वैसा। ओके, एक मिनट। हाँ तो फिर ये सारे बस में खुल गए मेरे स्क्रीन पे प्लीज। एक दो तीन। ओके, स्क्रीन दिख रहा है। यप दिख रहा है। ओके, शो मी काम। हेलो हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? हाँ हाँ, हेलो। हाँ, बोल भाई। बोल बोल। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉइस है बट ठीक है, अभी बोल दे। एक्सटर्नल नॉइज है, हाँ। अच्छा, तो लाइक रेज्यूमे का तूने अभी सेशन लिया था ना? यस, थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन दिया है मैंने उन लोग को। बाकी लाइक अगर कुछ स्पेसिफिक तेरे को बोलना है गूगल के लाइक बारे किस, में, या फिर इसके बस कुछ टिप्स ऐसे लेना सीपी के बारे में। सीपीडीए से मैंने सारा टच नहीं किया, तो उसके बारे में तू बोल सकता है। लाइक मुझे स्टैंडर्ड सेक्शन तूने बता देगा ना कि कल पे क्या क्या सेक्शन इंक्लूड करने हैं रेज्यूमे में? यस, लाइक बेसिक एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट अचीवमेंट्स, ये सब बोला। अगर जो तेरे को इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से एक बार बोलना है तो यू कैन बता हाँ, सकता है। तो industry perspective से अगर like if you are applying for a company, then if you tailor your resume according to the company job description, then it will be better. Like companies use करते ATS system for like for
eliminating the resumes. So if your resume contains keywords similar to like which is जो job description में पहले से है, so it will be better. Like while applying to Google, तभी गूगल का जॉब डिस्क्रिप्शन तो नहीं है अभी, बट मुझे जितने याद है उसमें लिखा था कि सी सी प्लस प्लस और जावा एनी सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड. सो आई हैव एडेड सी सी प्लस प्लस एंड पाइथन इन टेक्निकल स्किल्स. लाइक जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स रहते हैं वो तुम रेज्यूमे में ऐड करोगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एटीएस स्कोर. एंड गूगल डिस्क्रिप्शन में लिनक्स भी रहा तो मैंने टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में लिनक्स ऐड किया एंड ऑपरेटिंग सिस्टम and object-oriented programming. So you can just read the job description and tailor your resume based on the job description. So it will enhance your resume score as per the company's ATS system. And for standard ATS score, you can use websites like Resume Audit. Like मैं Resume Audit use करता हूँ mostly because वो सजेशंस भी देते हैं लाइक कौन से सेक्शन में क्या इम्प्रूवमेंट है एंड कौन से सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है. So experience section, project section, and like extracurricular section. Each section contains description of the thing like internship or project or the committee. So each description need to be follow some standard structure. So each description should start with the action verb and contain some quantifiable value. So that will increase your resume score. So you can use resume audit tool, which I was using in my career or while applying for the applications. So you can use that, which gives suggestions. Like free में तो सब नहीं मिलेंगे, थोड़े free में थोड़े बहुत मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलते. जितने मिलते तो उतने use करता था. So like you can see here for the Google's first description, it is starting with a verb engineered, and you can see every line like each starting with any action verb, not randomly like I have built this or I have worked on that. So this is some rule which is followed on the description section, and you should follow this rule for all descriptions which you uh, yeah, like resume में जब आप जो ऐड करोगे सब सेक्शन में ये डिस्क्रिप्शन फॉलो करना चाहिए. एंड for project section, like you should include project tech stack and the uh, live project demo link or live link. So मुझे GitHub link and demo link दोनों ऐड करना था. So मैंने सिर्फ GitHub लिंक ऐड किया है एंड GitHub के रीडमी में लाइव लिंक ऐड किया है. सो the HR can view my GitHub and also see the live demo if she visited the GitHub repo. Yeah, and see what are the extracurricular activities. तो extracurricular activities तो इनमें क्या क्या वो ऐड कर सकते हो एंड ऊपर टेक्निकल स्किल्स में यूज करके अचीवमेंट सेक्शन है. वो अचीवमेंट सेक्शन so, companies focuses on hackathons or some competitions winnings and these workforces like competitive programming platforms course. So, if you start CP and give contests regularly, then you can build a profile and you can add the ratings in your achievement sections. Yeah, that's all of the resume section. Okay, शुभम, दो तीन क्वेश्चंस मैं तेरे को No, पूछ लेता हूँ. यू कैन आंसर इट विथ yeah, योर रिज्यूमे. yeah. प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए? लाइक जैसे सेकेंड ईयर में है तू एंड तुझे प्रोजेक्ट बनाना है, तो व्हाट शुड बी द प्रोजेक्ट अबाउट एंड कैसे बनाना चाहिए? Okay. So प्रोजेक्ट का गोल ये होना चाहिए कि लाइक व्हाट प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग इन योर प्रोजेक्ट. सो थिंक इन लाइक तुम एक इंटरव्यू में हो एंड इंटरव्यू तुम्हें प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो यू कांट जस्ट से कि मैंने ये क्लोन बनाया और ये लाइक एक वेबसाइट का कॉपी बनाया ऐसा कुछ, बट वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए था प्रोजेक्ट. लाइक मेरे प्रोजेक्ट तो ऐसा लर्निंग बेस्ड है, सो मोस्टली ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व लाइक कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए प्रोजेक्ट. सो
my second project does that. It is a quantify X, which which gives you the all the uh, which fetches the all real time data of the contest. तुम एक ही वेबसाइट पे तीन वेबसाइट के कॉन्टेस्ट देख सकते हो कब है एंड कब कब हुए हैं. फोर्ट फोर्सेस, फोर्ट शेफ एंड लीड कोड, ये तीन इंटीग्रेटेड है अभी करंटली. एंड यू कैन ऑल्सो सी कम तुम्हारे परफॉर्मेंस एंड तुम्हारे कंपटीटर के परफॉर्मेंस. सो ये सिंपल प्रोजेक्ट है. लाइक इट सॉल्व प्रॉब्लम. लाइक यू डोंट हैव टू ओपन थ्री वेबसाइट एंड चेक कॉन्टेस्ट कब है एंड कब 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 फ्लैश हो रहा है ऐसा कुछ. तो एक ही वेबसाइट पे तुम सब चेक कर सकते हो. तो ये एक प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर रहा है, सिंपल प्रॉब्लम. एंड लाइक यू कैन ऑल्सो create you should create projects which solve a problem, so it will give an edge in interview or while explaining your project. Yeah. ओके। एंड जो प्रोजेक्ट बनाया, व्हाई ऑन कोड शेफ कोड फोर्सेस, मतलब कि खुद का पर्सनल इंटरेस्ट था, लाइक व्हाई डिड यू मेक सेलेक्ट दैट स्पेसिफिक टॉपिक? About quantify x. हाँ, क्वांटिफाई एक्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स Yeah. एज वेल। So quantify x, this was a problem. like मैं मुझे जब भी कॉन्टेस्ट देखने होते हैं कि कब कब कॉन्टेस्ट है, आज कोई कॉन्टेस्ट है कि नहीं, तो मुझे तीनों वेबसाइट खोल के देखने होते थे कि चलते आज किसी वेबसाइट पे से कि नहीं. बट मैं अभी ये यूज करता हूँ, सीधा अपना वेबसाइट ओपन करता हूँ एंड सीधा मुझे दिख जाता है कि आज कोई कॉन्टेस्ट है कि नहीं, कल है कि नहीं. सो ये मेरा डेली प्रॉब्लम था जो मैंने एक वेबसाइट से सॉल्व किया. तो यस, मतलब कि यू आर ट्राइंग टू से कि जब भी इंटरव्यू कोई लेगा, देन यू आर सेइंग कि व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट, यू विल फर्स्ट स्टेट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एंड देन इन द एंड यू एंड विल से कि हाँ, दिस प्रोजेक्ट yeah, इज like सॉल्विंग सम रियल वर्ल्ड this is प्रोजेक्ट। yeah, this is the solution for that problem statement. I think this And is the star format, right? Situation, task, action, action reward. I is think reward. Yes, so. yes, yes. ये I Yeah. think this is preferred in interviews कि तुम लोग ये फॉर्मेट पे अपने प्रोजेक्ट्स को बोलो कि पहले सिचुएशन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है और टास्क इन हैंड, एक्चुअल टेक्निकल Like टास्क क्या star है. format to HR round format वाला होता है. यस 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 वही. Yeah. आई थिंक प्रोजेक्ट्स के लिए भी होता है एंड वो एक्सपीरियंस के लिए भी होता है ना. Yeah, like problem then solution, and like if you propose like two three solution and select one, then it will be more better. Like you are saying ki I am selecting this solution and justifying why the other two are not better. So this shows you are thinking all the possible solutions. तो ऐसा कुछ पॉसिबल सोल्यूशन सोच के रखोगे अपने प्रोजेक्ट के लिए तो वो भी बेटर रहेगा. Like one possible question would be कि quantify X में why did you use React.js for API fetching? Yes. और Yes. हाँ, वैसे Like करके why front end में why React.js, why not some other Angular क्यों नहीं use किया या ऐसा Angular. कुछ? Yeah. So we can say that here कि Angular एक full fledged React library, and Angular एक complete बिगर प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है. तो छोटे प्रोजेक्ट में एंगुलर यूज करके कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ाना चाहिए. Yeah, got it, got it. Yeah, and let's just say you don't have any experience, मतलब कि हमारे mentees के पास कुछ भी experience नहीं है. So um, अभी just first internship ढूंढ रहे हैं, तो कैसे resume बनाना चाहिए? क्या Yeah, components होने so चाहिए in वो that resume? case, like they can skip the experience part and focus on extracurricular part activities and like project section. So they can include instead of three projects, they can include four projects. So like पूरा पेज भरा हुआ रहेगा तो बेटर लगेगा. थोड़ा empty sides better, like थोड़ा नेगेटिव साइड दिखाता है. तो try to fill your full page single page. Okay, okay. That's all the question which I have, जो मैंने मेरे mentees के behalf पे पूछा. But yeah, mentees you can ask any questions. ठीक है, Googler बैठा है अभी अपने meet में. लाइक ऐसा दूसरा चांस आई डोंट थिंक. it would be very rare because so third year में है currently. उससे भी I don't think like there are any rulers या ऐसा कुछ. So this would probably be a very good golden opportunity, I would say.
सीपी एकदम खराब हो तो ऐसा लाइक अच्छा कैसे बने उसमें? मेरा भी वही क्वेश्चन था। एकदम कौन सा, लाइक कौन सा सेमेस्टर, कौन सा ईयर? सेकेंड ईयर फोर्थ सेम। आई थिंक ये सब सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 वाले ही है। ओके, सो लाइक सीपी में अच्छा बनने के लिए तो तुम्हें प्रैक्टिस ही करना है। लाइक स्टार्ट विथ, लाइक आज आज खराब है मतलब क्या खराब है? लाइक क्वेश्चन देखते ना तो ऐसे तुरंत समझ में नहीं आता कि यहाँ पे मैं शुरू कहाँ से करूँ, लाइक कोड भी भूल ओ, जाओ, लाइक उसका सोल्यूशन ही समझ में नहीं तो आता। कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो तुम? लाइक लीड कोड पे थोड़ा बहुत ट्राई किया था मैंने, इजी वाले वो भी। हाँ, सो इजी वाले पे प्रॉब्लम है। ओके, सो लाइक इनिशियली ठीक है, ये प्रॉब्लम सबको फेस होते हैं, तो यू कैन जस्ट ट्राई, लाइक क्वेश्चन देख या समझ नहीं आया तो थोड़ा सोचो और एंड क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करो, एंड फिर भी सॉल्व मतलब कुछ आइडिया या डायरेक्शन नहीं आ रहा तो यू कैन लुक इनटू द हिंट्स, लाइक डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप मत करो, पहले हिंट्स देखो एंड फिर ट्राई करो। लाइक 40 मिनट ट्राई किया तुमने, नई डायरेक्शन कुछ मिला, फिर हिंट्स देखा, फिर 20 मिनट ट्राई किया। Like if you directly jump into the solution, you are not building any thinking ability. You are just reading the solution and copy pasting the code. So thinking ability इससे develop होती है, like तुम struggle कर रहे हो, so just try to think for the direction. It will be better with practice. एंड लाइक ऐसा दिन का रोज करना चाहिए सीपी की, लाइक ऐसा हफ्ते में 1-2 दिन किया तो चलेगा? CP CP सीपी हफ्ते लाइक में एक दो एटलीस्ट दिन ऐसा नॉट एज अ आईसीपीसी लेवल का, बट एटलीस्ट ऐसा कोई अच्छी प्लेसमेंट लग जाए टाइप ऐसा। हाँ, अच्छी प्लेसमेंट लग जाए वो टाइप के लिए भी, लाइक कंसिस्ट लाइक रेगुलर होना चाहिए तुम, लाइक वरना अगर थोड़ा गैप मिलेगा तो फिर लेवल फिर से डाउन होता है। तुम 1 वीक 2 वीक नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी जो स्किल्स डेवलप हुई तो थोड़ा फिर से डाउन होगी, तुमसे जो क्वेश्चंस हो रहे थे फिर नहीं होंगे, तो थोड़ा गैप मिलता है सीपी से तो डाउन होता है, तो रेगुलर रहने का ट्राई करना चाहिए, तो ये बोल, रेगुलर यानी डेली भी कर सकते हो तो बेटर है, डेली इज द बेस्ट। ओके ओके। लाइक डेली कुछ ना हो तो लीड कोड, लाइक Yeah, जो like कॉन्टेस्ट lead होता code है। provides a हाँ, problem of the day for like डेली एक प्रॉब्लम तुम करोगे तो उससे हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगी, जो अभी धीरज कह रहा था कि हम डेली ट्रैवलिंग में करते थे, प्रॉब्लम ऑफ द डे। आप लीड कोड के लिए कोई ऐसा प्लेलिस्ट फॉलो करते थे कि पैटर्न्स पहले जीपीटी से किया एंड देन उस पे क्वेश्चंस या ऐसे? लाइक जीपीटी तो यूज नहीं करता था मैं, प्लेलिस्ट यानी लाइक कोई डीएसए प्लेलिस्ट बोल रहे हो क्या? हाँ मतलब हाँ। या सो डीएसए प्लेलिस्ट में एक फॉलो करता था। वी हैव सो मेनी ऐसे लोग, श्राइवर का फेमस है वो, बट मैं कुणाल कुशवाहा करके एक यूट्यूबर है, मैं उनका फॉलो करता था, एंड उनका एक गिटअप का रेपो भी है जहाँ पे उन्होंने ऐसा क्वेश्चंस की लिस्ट दी है, काइंड ऑफ शीट कह सकते हैं, मैं वो थोड़ा फॉलो किया था, पूरा कंप्लीट नहीं किया था बट वो फॉलो किया था, एंड या कुणाल कुशवाहा प्ले लिस्ट। मैं ये मेरे को लिंक पास में भेजते हैं ना, तो मैं टेस्ट के ग्रुप में डाल दूंगा। ओके, सो मैं डीएसए प्ले लिस्ट एंड गिटअप का रेपो दोनों दे ठीक है। कौन सा लैंग्वेज में करना चाहिए या कोई भी चलता है? लाइक लैंग्वेज तो कोई भी चलेगा बट C++ माना जाता है कि सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी कम्युनिटी ज्यादा है, एंड तुम्हें कोई ऐसा नीश क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा बट वो सीपीपी में मिल जाएगा, बट लैंग्वेज मैटर नहीं करता, तो कौन से भी लैंग्वेज में कर सकते हो। पाइथन भी चलता है? यस, पाइथन में करते हैं बहुत सारे लोग। मैं खुद पाइथन में करता था इन सेकेंड ईयर। लाइक जो भी मेरा रैंकिंग है 1550 बट एंड प्रोजेक्ट, हाँ, बट वही वही। बट अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सीपीपी में स्टार्ट करो, मैं ये सजेस्ट करूंगा, एक टाइम के बाद सीपीपी बेटर पड़ेगा, लाइक पाइथन की कम्युनिटी
बहुत कम लोग करते हैं, बट सीपीपी में लाइक जितने भी तुम देखोगे ज्यादातर लोग सीपी में करते हैं, तो तुम्हें दूसरों के सोल्यूशन देखना समझना ही ये पड़ेगा। दोनों के लिए बोल रहे हो, डीएसए और सीपी के लिए या फिर सिर्फ सीपी के लिए? दोनों के लिए कह रहा हूँ, अगर स्टार्ट करो तो सीपीपी बेटर है, ऐसा C++। ये गूगल वगैरह में लाइक वो लोग प्रोजेक्ट्स ज्यादा देखते हैं कि लाइक सीपी पे ज्यादा फोकस रहता है वो लोग का? लाइक अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स है बट सीपी लाइक ऐसा नहीं खराब है बट अच्छा खासा है, तो लाइक चांसेस है कि सीपी बढ़ाना पड़ेगा फिर। लाइक अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं एंड सीपी डिसेंट है तो चांस है, बट अगर सीपी अच्छा लेवल का है तो चांस है ही ऐसा। एक बार तेरा इंटरव्यू वाला प्रोसेस बता देना कि गूगल में कैसे इंटरव्यू मतलब हुए थे। Okay, interview process. So for like 2026 batch, Google came on campus. So like it started with the resume submission round, and later we had a OA. Like इसमें resume selection नहीं हुआ था, ऑनलाइन असेसमेंट के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी। सो इसमें प्रोजेक्ट ऑन कैंपस में मोस्टली मैटर नहीं करता, लाइक दे नॉर्मली डू सीजीपीए शॉर्ट लिस्टिंग और ऑनलाइन असेसमेंट्स एलिमिनेशन राउंड। तो ऑनलाइन असेसमेंट राउंड होता है जिसमें 2 क्वेश्चंस थे, एंड बोथ आर वी कैन से लीड कोड हार्ड लेवल क्वेश्चंस इन द ऑनलाइन असेसमेंट। And after online round, we had 2 technical round, and both are DSA round. And in both round, I had like 2 lead code, medium to hard level question. Like first was medium question, and second was second can range from medium to hard, like not hard but more than medium. These two DSA round was 45 minutes, and later we got like I got off. Like 3 rounds: online assessment, tech round 1, tech round 2. So as you can see, CP का कितना वेटेज है, like BSc Like and CP का कितना वो वेटेज है। whole तीनों राउंड में सिर्फ DSA and CP kind of like only DSA questions, like so if you start from और sample. ये तेरा ऑन कैंपस वाला था ना, बट इसमें लाइक आई डोंट रिमेम्बर, बट आई थिंक यू सेड कि तेरा कुछ तो एचआर राउंड में शायद प्रोजेक्ट पूछा था कि कुछ तो हुआ था, राइट? तू बोल रहा था, मेरे को याद है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे बोल रहा था कि भाई वो सेम डे पे ही हो गया था, ऐसा कुछ था कि नहीं? ना वो लाइक सीन क्या था कि 1 डे पहले रिजल्ट ओए का रिजल्ट आया, एंड नेक्स्ट डे पे मैं इंटरव्यू था। तो नेक्स्ट डे पे ही मेरे लाइक 1 डे पहले मुझे पता चला कि कल नेक्स्ट डे इंटरव्यू। सो इन लाइक नॉर्मली ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट रहते तुम्हें टाइम नहीं मिलता प्रिपेयर करने का, तो अभी से स्टार्ट करोगे तो बेटर है। लाइक मुझे 1 वीक पहले पता चला ओए है मेरा, तो 1 वीक मुझे प्रिपरेशन का टाइम मिला फॉर गूगल ओए, एंड इंटरव्यू के लिए तो मुझे 1 नाइट का टाइम था। लाइक 1 नाइट भी नहीं बोलेंगे कि 1 डे पहले शॉर्ट लिस्टिंग आई एंड इंटरव्यू शेड्यूल नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे पता चला कि मैं मॉर्निंग में इंटरव्यू शेड्यूल है, तो मुझे 2 आवर्स मिले था अराउंड इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के। तो वो प्रिपरेशन टाइम, एक्चुअल प्रिपरेशन टाइम 3 मिनट, वो कह रहा था मैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप की बात कर रहा है। Yes. So like you can see कि ऑन कैंपस में इतना हार्श लाइक टाइमलाइंस हो सकता है। ऑफ कैंपस में आई थिंक दे से कि तुम लोग के हिसाब से शेड्यूल, आई थिंक दे अलाउ इट, राइट? बट या ऑन कैंपस ऑफ कैंपस में देयर इज वेरी लॉन्ग वेटिंग टाइम। लाइक अभी एक लाइक मेरा फ्रेंड था, उसका ऑफ कैंपस ही था, लाइक उसका अराउंड 1 मंथ में पूरा ऐसा इंटरव्यू हुआ था, एंड मेरा सिर्फ 1 डे में हो गया था। So off campus times varies, but if you are focusing on like off campus तो सब करते हैं, but on campus करना ही है, तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर मतलब प्रिपरेशन में क्या करना? प्रिपेयर मतलब लाइक अभी कोई कंपनी आई अचानक नहीं, मतलब कि अभी प्लेसमेंट सीजन चालू हो गया, कंपनी आए तो तुम्हें नेक्स्ट डे या 2-3 डेज बाद ही करते उनका ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू, लाइक होल्ड प्रोसेस 1 दिन में भी हो सकता है उनका। तो इसलिए प्रिपेयर यानी कि तुम्हें एफटी सब तुम्हारा रेडी होना चाहिए, सीपी दिए से तुम्हें लाइक डिसेंट आना चाहिए कि तुम उनके क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ऐसा प्रिपेयर। आई थिंक तुम्हें दो 2-3 चीजें दिन बता सकता मिलेगा है इसमें। उस, हाँ क्या? इसमें 2 चीजें बता तू। एक तो वो बता कि कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी होता है डीएसए का, और दूसरा एक तो यस, अपना मॉर्गन हाँ स्टैनली का इंटरव्यू प्रोसेस बता दे। ओके। सो
कंपनी स्पेसिफिक जो देखने वाला, लाइक अभी लेट से अभी ऑन कैंपस मैसेज आया कि कल 2-3 दिन बाद मॉर्गन स्टैनली का इंटरव्यू है, लाइक ऑनलाइन असेसमेंट है। सो यू हैव ओनली 2-3 डेज, तो 2-3 दिन में तुम पूरा ऐसा डीएसए पढ़ तो नहीं सकते। अगर तुमने किया है तो रिवाइज करना भी बहुत हार्ड रहेगा। सो द बेटर अप्रोच विल बी कि तुम कंपनीज के लाइक इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ो एंड उसके हिसाब से क्वेश्चंस रिवाइज करो, लाइक टॉपिक्स रिवाइज करो जो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्रिएट करो। आई थिंक लीड कोड प्रीमियम में वो कंपनी वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं, राइट? प्रॉब्लम सेट्स या शायद। लीड कोड पे भी रहते हैं बट वो प्रीमियम पे है। एंड एक वेबसाइट मुझे पता है, नेक्स्ट लीड करके, वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे, तो वो भी शेयर कर दूंगा मैं। क्या क्या ओके। शेयर करना चाहती है, लिस्ट बना लेना तुम तो। हाँ, मैं बनाता हूँ लिस्ट। हाँ, भी जरा वो मॉर्गन स्टैनली 3 का बता था कि एक दिन में भाई लाइक बता दे। मॉर्गन स्टैनली। सो मॉर्गन स्टैनली का पहला राउंड था एप्टीट्यूड राउंड, एंड विच आल्सो कंटेन्स डीएसए क्वेश्चंस, लाइक 3 डीएसए क्वेश्चंस थे उसमें। तो हमेशा वेटेज ज्यादा ना डीएसए क्वेश्चंस का रहता है। सो इट विल बी बेटर इफ यू लाइक डीएसए क्वेश्चंस तुम्हारे अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे तो लाइक ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर होने का चांसेस ज्यादा है। सो जिनका ऐसा तीनों क्वेश्चन डीएसए का हुआ था उनका क्लियर ही हो गया था। एंड एफटी तो लाइक अगर सेम लेवल पे लाइक किसी का 2 क्वेश्चन हुआ तो तब एफटी के कलते मार्क्स कंसिडर होते हैं। सो मोस्टली फोकस करो डीएसए पे एंड देन एफटी। एंड एप्टीट्यूड तो पता रहेगा ना क्या क्या सब सेक्शंस होते हैं स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड के। CS fundamentals and basic after like verbal reasoning, सीएस logic और ये फंडामेंटल्स, सब। बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश एंड लाइक रीजनिंग होते थोड़े, एंड थोड़े फिजिक्स के रहते हैं, सिंपल स्पीड स्पीड टाइम, लाइक स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले क्वेश्चन। सो ये सब क्वेश्चंस इजी रहते हैं बट लाइक इसमें स्पीड मैटर करता है आपकी में, तुम्हारे पास क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे एंड टाइम कम रहेगा। सो उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए रहता है एप्टीट्यूड सेशन के लिए। सो मॉर्गन स्टैनली उससे स्टार्टेड विद एप्टीट्यूड राउंड, जिसमें 3 सेक्शंस थे। फर्स्ट सेक्शन वाज डिबगिंग सेक्शन, जिसमें तुम्हें क्वेश्चन दिया है एंड आंसर भी दिया है, बट आंसर में कुछ लाइक कुछ एरर है, प्रॉब्लम है, तो वो डिबग करना था। ये सेक्शन 1 था। एंड सेक्शन 2 वाज एफटी सेक्शन जो बताया, एंड सेक्शन 3 वाज डीएसए सेक्शन, जिसमें 3 डीएसए क्वेश्चन है। ईच वाज आई कैन से लाइक 1 वाज इजी एंड 2 वाज मीडियम टू हार्ड लीड कोड। एंड फॉलोड बाय लाइक इसके बाद अराउंड आफ्टर 1 वीक वी हैड ऑन साइड राउंड, लाइक उनके कंपनी में जाके, एंड पूरे एक दिन में उनका प्रोसेस कंप्लीट हुआ था। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एक दिन में प्रोसेस कंप्लीट होता तो मैं प्रिपेयर करने का टाइम नहीं था, तो 1 वीक का टाइमलाइन था। वो टाइम पे इफ यू लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मॉर्गन स्टैनली देन यू कैन जस्ट रीड देयर इंटरव्यू प्रोसेस एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑनलाइन लिखे। सो 1 day process and started with 2 technical rounds. First technical round was resume, like they just see a resume and ask questions from that, like तुमने सब सच लिखा है कि नहीं, झूठ लिखा है, सब any line they can select and ask why you have written this, ऐसा कुछ। एंड उसके बाद फर्स्ट राउंड में सीएस फंडामेंटल्स, डीएसए एंड सम लैंग्वेज बेसिक्स, लाइक तुमने कोई लैंग्वेज सिलेक्ट किया है कि तुम्हारा ये प्राइमरी लैंग्वेज है, तो उसका कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ लाइक एज केसेस टाइप, लाइक पाइथन में 0.1 + 0.2 इज नॉट इक्वल टू 0.3, ऐसा कुछ है ना, तुझे पता है? हाँ, इंटीजर ओवरफ्लो वो होता है ना, या लाइक फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो। फ्लोटिंग पॉइंट एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते 0.3 के, ऐसा। तो ऐसा कुछ नीश टॉपिक पूछ सकते हैं अगर तुमने प्राइमरी लैंग्वेज अपना कुछ कहा है उनको तो। So this was technical round 1 and technical round 2 was system design round, जिसमें उन्होंने ई-कॉमर्स वेबसाइट की कल सिस्टम डिजाइन पूछी थी। तो इसमें हमें लाइक डेटाबेस सिलेक्ट करना था, लैंग्वेज सिलेक्ट करना था एंड हाई लेवल डिजाइन देना था, लाइक इतने यूजर्स आ रहे तो तुम क्या क्या लगाओगे, लोड बैलेंसर लगाओगे, फिर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर करोगे, मोनोलिथिक करोगे,
एंड क्यों करोगे, सब ट्रेड ऑफ देने से तुम क्या डिसाइड करोगे। दिस वाज टेक राउंड 2 एंड लास्ट राउंड वाज एचआर राउंड, जिसमें स्टैंडर्ड एचआर के क्वेश्चंस पूछे गए। लाइक या दैट वाज अबाउट एमएस राउंड। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन सिस्टम सिस्टम डिजाइन के लिए लाइक मैंने कहाँ से पढ़ा था, वो गौरव सेन करके एक यूट्यूबर है, बहुत फेमस है फॉर सिस्टम डिजाइन। सो वो यूज किया था मैंने फॉर सिस्टम डिजाइन, फॉर स्टडी सिस्टम डिजाइन। भाई ये कोई और लिस्ट कर सकता है तो वो भी लिस्ट कर दो भाई, शो लिंक्स देना। आई थिंक नेक्स्ट वीक था तो टीसीपी प्लेलिस्ट है और ये सिस्टम डिजाइन का, तो ये चार से कोई लिखते हो गए तो फिर बेटर रहेगा। तुम बाद में पूछ सकता हो शुभम से। हाँ हाँ, क्या पूछा था मैं? हाँ, लेट्स जस्ट से मतलब मेंटीज के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ तेरे को कि प्लेसमेंट सीजन अभी मई अक्टूबर 2027 में आएगा या जून 2027 में, तो या अब क्या जून जून करना चाहिए तुम लोग को, मतलब अगर 2010 जून 2027 टारगेट है। लाइक जून 2027 टारगेट है ना। सो अभी क्या चल रहा है, अभी है 2026 26। फेब्रुवरी। हाँ, सो लाइक अभी मोर देन 1 ईयर का गैप है, तो इट विल बी बेटर कि अभी तुम सीपी पे फोकस करो। लाइक अभी सीपी पे फोकस करोगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज होगी, एंड लेटर यू कैन लाइक व्हेन देयर इज around 8 months gap, then you can switch to DSA, like only lead code grind and focusing on DSA style problems and solving lead code or like topic wise problems. And like जब 2 months बच रहेंगे, then you can focus on actual interviews, लाइक अपने कॉलेज में जैसे होते हैं एफटी सेक्शन, देन दिस एचआर स्टाइल क्वेश्चंस एंड अदर। अगर कंपनीज आल्सो टेक जीडी राउंड तो जीडी पे फोकस कर सकते हो। सो दिस ऑल फॉर 2 months व्हाट आई सजेस्ट। ओके, मतलब कि अगर जीरो है अभी डीएसए सीटी जीरो है, या अ, लाइक लेट और अर्ली तो कुछ कह नहीं सकते अभी, लाइक जितना पहले स्टार्ट करोगे उतना बेटर है। सो यू कैन लाइक अभी स्टार्ट करना बेटर रहेगा। ओके। लाइक अभी यश का एग्जांपल ले सकता है कि यश ने आई थिंक ये स्टार्ट किया था राइट, फिर भी या उसका बट उसने ग्राइंड किया था। हाँ फिर उसने कड़क मतलब कड़क ग्राइंड किया तो यस लाइक यस बट ही यस स्टार्टेड लेट, लाइक आई थिंक यश आई थिंक ही स्टार्टेड लेट, थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था थर्ड ईयर में डीएसए स्टार्ट किया था एंड उसने, लाइक मिड सेम फाइव कह सकते हैं शायद ना। वही तभी स्टार्ट किया था, एंड अभी उसको 19 एलपीए आईसीआईसीआई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 19 एलपीए मिला। सो अभी आईडीएफसी वो बैंक, करंटली, हाँ। हाँ वो अभी हैदराबाद में करंटली 5 स्टार होटल में उसका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है। सो दैट्स आल्सो पॉसिबल कि सेम फाइव फाइव में स्टार इफ यू होटल स्टार्ट में बैठे डीएसए, हैं अभी। यस डीएसए और सीपी लाइक चालू कर रहा सेम फाइव में, तो फिर भी हो सकता है। यू आर नॉट लेट बट ग्राइंड करना पड़ेगा। हाँ उसने कड़क ग्राइंड किया था, मतलब उसने अलग लेवल ग्राइंड किया था। सो मतलब सोच लो जितना जल्दी करोगे उतना लाइक बेसिकली वो हेक्टिक नहीं होगा, लाइक अपने पेस पे चल सकते हो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे। या दिस इज द यस एंड एडवाइस फॉर सेम। ऑल, इसको प्लेसमेंट्स करना है फिर मास्टर्स करना में भी हो सकता है। मैं चिराग बोले तो फिर डीएसए शुड बी योर फोकस राइट नाउ, रिसर्च इन लेस देन like if you secure a good placement in say अगस्त, लाइक सितंबर अगस्त तक कर लोगे ना, फिर यू कैन फोकस ऑन रिसर्च। उसके बाद एक बार जॉब लग गया फिर आराम से रिसर्च कर सकते हो इन दैट लाइक मीनिंग 8 मंथ्स और सो, क्योंकि जून से चालू हो जाता है, जून टू सितंबर ही आई थिंक मेजोरिटी कंपनीज आती है। तो अगर जो उसमें लग गया फिर तो फिर आराम से यू हैव लॉट ऑफ फ्री टाइम, यस और वो स्ट्रेस नहीं रहता है कि प्लेसमेंट मेरे को जॉब भी करना है उसका, लाइक जॉब का अप्लाई करना है जॉब नहीं मिला वैसा। So, आराम से रिसर्च का वो माइंडसेट फ्री भी हो जाता है। Any other questions? भाई जस्ट रेज ऑफ हैंड्स, कितने लोग हैं जो प्लेसमेंट्स के बाद मास्टर्स कर रहे हैं? ओके, ऋषा, विवान, अर्पित, अनन्या, और पता चलता है कितने सो रहे हैं। हाँ, क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है, ऑलमोस्ट 2 आवर्स होने लगे हैं। तो एनी क्वेश्चन यू हैव फॉर शुभम?
एमएल का क्या सीन है कॉलेज में? इसका ML, मशीन लर्निंग, लाइक yes. मशीन लर्निंग रोल के लिए पूछ रहे हाँ हाँ। हो? ओ, एमएल के रोल तो लाइक अभी तक शायद मैंने एकदम ना के बराबर देखा है क्या? ZF आई थिंक था ना कि आईडी वो फाइल हाँ, आईडी फाइल तरन को लगा था वो आई थिंक ML रोल था ना। जेडएस बोल रहे हैं? हाँ शायद। जेडएस तो बिजनेस एसोसिएट है। एमएल रोल नहीं है, नहीं नहीं, बिजनेस डेटा एसोसिएट तो डेटा मतलब एनालिसिस साइड है, ओके। एनालिसिस साइड है वो, जेडएस का नहीं वो दोनों रोल तरन, एनालिसिस साइड है। आई थिंक तरन को ML लाइक रोल लगा था, तरन या सौम्या को। तो दोनों में सेम। नहीं, सौम्या का तो स्विगी है। अच्छा डेटा साइंस इंटरनेट स्विगी राइट। हाँ सो हाँ हाँ, लाइक आई थिंक लाइक ML तो एमएल के एमएल के बहुत ऐसा रेयर क्या, लाइक मैं तो बोलूँगा कि मुझे दिखे ही नहीं। डेटा साइंस के दिखे थोड़े बहुत, डेटा एनालिस्ट, हाँ डेटा एनालिसिस के एंड डेटा साइंस के रोल थोड़े बहुत दिखे, एमएल के ज्यादा नहीं दिखे मुझे अपने तो कॉलेज में। वही फैमिली में डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, एमएल, लाइक अगर एमएल, हाँ सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। मतलब आई वही थिंक फिर फैमिली बोल रहा हूँ कि पूरा फैमिली ऐसा प्योर एमएल ही नहीं, थोड़ा डेटा साइंस भी, थोड़ा एमएल भी, कुछ भी, पर वो फैमिली में कुछ आता है अच्छा, कॉलेज। हाँ थोड़े बहुत आते हैं, आते हैं, और डेटा एनालिसिस के नाम पे आते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ। डेटा एनालिस्ट एंड डेटा सो साइंस के आई मोस्टली थिंक उसमें बहुत सारे डेटा थे। एनालिसिस का काम हो सकता है। हाँ, मतलब कि वही डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के नाम पे बहुत आते हैं, अभी उसमें एक्चुअल काम क्या कराते हैं उसका आइडिया तो नहीं है, बट हो सकता है उसमें एमएल का भी होगा थोड़ा बहुत, डेटा एनालिसिस में। Yes, but core ML या core DL ज्यादा expect मत करना to be honest because that's like even in even outside India it's mostly for after PhD or after MS वाले बंदों के लिए ही होता है वो reserved like research engineer roles or ओके, research scientist roles वैसे like बाकी सब जो तुम लोग को टारगेट करना है as I said वो labs टारगेट कर सकते हो ऑफ कैंपस बट ऑन कैंपस तो HT SWE ये सभी 80% हो गए आई वुड से आउट ऑफ द 100%। सबसे ऊपर ही मुझे कहते मशीन लर्निंग इंजीनियर का रोल दिखे, नाइस। IDFY करके एक है, वो आई थी मशीन लर्निंग के लिए, बाकी और नहीं दिख रहा मुझे। मुंबई की आई थिंक अब तक क्लास से किसको लगा है ID5 का? नहीं कितने क्लास से लगे? पता नहीं किसका, तो आई थिंक मैंने मैसेज देखा हाँ, था। देख लेते हैं। मैंने भी देखा तो था, देखो कॉम्स, कॉम्स का तो कितने का देखे। हाँ सर देखे ना। हाँ एनी अदर क्वेश्चन तब तक? Anyone? Vivan कुछ इसके Yes, I want to ask. Even my goal is. विनीत सोलंकी। Hello. विनीत सोलंकी विनीत ये अपने सोलंकी, क्लास अमार खान, ध्रुव ओझा, अथर्व वखारे। नहीं नहीं तो फिर ये IML ब्रांच रहेगा। ये है मेरे बांच। वही सब दूसरे ब्रांच से। ये विवान बोल। Yeah, even my goal is 2 years of work ex then masters, but I'm not able to understand how to maintain the balance between DSA and ML. Like, what is the required amount of DSA required to get me a decent job enough to get me a good masters? आई थिंक ये हम लोग बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर मास्टर्स लाइक आफ्टर मास्टर्स व्हाट्स योर प्लान? PhD करना है, रिसर्च ओरिएंटेड रोल्स आना है कि उधर मास्टर्स या फिर उधर ST SWE रोल्स इन लाइक US और व्हाटएवर? Mostly उधर जाके SWA. तो फिर इधर आई वुड से तो फिर CP पे ज्यादा फोकस कर। लाइक रिसर्च इज गुड बट द programs you will be targeting for your masters, those will be professional programs. Like as I categorized before, professional programs hote, research oriented programs hote. Professional programs, they value industry experience more. So, and this industry experience will be valued after, like when you apply for jobs after your MS as well. So TSA and DSA भी तभी भी वो valuable है ही।
कि यूएस में जाओ या फिर इधर जाओ, डीएस से तो पूछते ही है। तो फिर डीएस एंड एमएल करो अच्छे से। रिसर्च इज लाइक सॉर्ट ऑफ एंट्री बैरियर आई वुड से टू एकदम टॉप टियर प्रोग्राम्स। लाइक कॉर्नेल में जाना है, कॉर्नेल का कॉर्नेल या फिर कोलंबिया में जाना है, तो उन लोग के लिए मे बी एक रिसर्च पेपर होगा तो बेटर होगा, लाइक इन योर सिलेक्टेड डोमेन, जो भी एआई है या जो भी है। ACM would be very good for that. हाँ बट हाँ बट वन थिंग आई वुड से कि अगर जो तुम लोग का प्लान है कि एमएस के बाद रिसर्च इंजीनियर रोल्स या रिसर्च साइंटिस्ट रोल्स या आई एम फॉरगेटिंग वन अदर जॉब रोल, बट वैसे रोल्स चाहिए, देन पीपल स्मार्टर रोल। Because research engineer roles के लिए I went through, because I'm also preparing for them, I went through certain job descriptions and उधर like the particular वो लोग सब डोमेन्स मेंशन करते हैं कि सपोज कोड ट्रांसपाइलेशन, या चलो एक बहुत कॉमन केस बोलता हूँ, एजेंटिक है, तो अगर जो उसके रिलेटेड तुम लोग का पास पेपर हुआ, then it's obviously helpful to pass the first initial screening round. क्योंकि as Shubham said I think कि ATS में दे चेक द कीवर्ड्स राइट, कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स है वो तुम लोग के रेज्यूमे में हुआ है तो वो बेटर रहेगा। तो सिमिलरली अगर जो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो रिसर्च डोमेन मेंशन किया है वो तुम लोग के सीवी या रेज्यूमे में हुआ और तुम लोग के पेपर्स के अंदर हुआ स्पेशली, देन इट्स बेटर। And papers also, another good point for papers is that for the job you won't be able to decide कि तुम लोग का एग्जैक्ट प्रोजेक्ट या टेक स्टैक क्या रहेगा। बिकॉज लाइक एमएलई, चलो एमएलई मिल भी गया कैसे भी, ऑन कैंपस तो रह रहा है बट मिल गया चलो एमएलई या एचटी, अभी यू आर 100% श्योर कि तुम लोग को एजेंटिक एआई या ऐसे कुछ फील्ड में मिलेगा, तुम लोग को एकदम रैंडम फील्ड में मिल सकता है, लाइक सपोज स्पीच रिकग्निशन ऐसे कोई फील्ड में मिल गया। सो वो अभी तुम लोग को अगर जो वो तुम लोग को बाद में एमएस के बाद वही सेम डोमेन में नहीं रहना है, then it's better to do a paper and what you want your domain to be and then apply it for those jobs वैसा। So like papers and projects give you freedom and experience gives you like value, I would say. Does this answer your question? Good on. Yes. Any other I questions? even wanted to ask, like, if any of you could actually define a metric for how much DSM we should build. Like, I got the ML part which you told, but a metric for DSM, like this much rating, or what would be enough types? Subham, think ये तो better answer कर पाएगा। So enough rating, like for you're saying like getting a job in on campus. Not particularly on campus, anything. मतलब. Like anything, मतलब बोलेगा तो कुछ upper bound नहीं रहेगा। Like कुछ Okay, ऐसा so let's go with 12 LPA कुछ भी yeah, नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ। What I'm saying is हाँ मतलब एक decent job, हाँ 10 plus 12 plus तो मैंने होता है। 10 plus Yes. हाँ तो like अगर लीड कोड की बात करें तो like night, more than night, like not just edge पे night के, like night and guardian के center पे, ऐसा मैं कह सकता हूँ। It's a decent, like you can you can solve more than 50% DSA questions in the online assessment, like अपने college में, अपने college के DSA questions के हिसाब से बोल रहा हूँ, जिस तरह के पूछे थे। So night and if you don't know, night and guardian are values, मतलब क्या बोलते हैं, rankings, क्या tiers and like night and guardian is a title in at lead code, and CC पे तो like अभी क्वेश्चंस बहुत अलग हो रहे हैं, तो अभी एंड CC पे लीड कोड पे भी चीटिंग होती है। CC पे I would advise, क्योंकि मैं पहले CC करता था कोड शेफ, so I would advise कि switch to either lead code or CF, because
CF is better for CP, I think, and lead code is obviously better for DSA and tracking interviews. CC पे Like थोड़े weird questions आते हैं. हाँ, CC पे like it's more focused on problem solving. So if you wanted that, you can target 4 star. 4 star is 1800, right? Yeah, 1800. Four Like अभी star तुम is सेम फोर में तो उस हिसाब से 4 स्टार टारगेट कर सकते हो ऐसा 4 star कितना rating हुआ? I think 3 star is 18 1600. So 4 star yeah 1800. 1800 like 1700 or 7 yeah more than 1700 I think this is achievable. Like क्योंकि मैं CP नहीं करता था फिर भी मेरा 1550 like almost मतलब उतना था. तो फिर अभी अगर तुम लोग CP में फोकस करो then 1750 1800 is quite achievable. Like even if you don't yes like CP like base that much. yeah अगर तुम कॉन्टेस्ट रेगुलरली दे रहे हो एंड उसको आप सोल्व कर रहे हो like सॉल्विंग क्वेश्चन आफ्टर कॉन्टेस्ट जो तुमसे नहीं हुआ so it will be easily like not easily but थोड़े टाइम के बाद आराम से हो जाएगा कंसिस्टेंसी के साथ कॉन्टेस्ट एंड अप सॉल्विंग सिर्फ लीड कोड भी कर सकते हैं ना या दोनों करना पड़ेगा लाइक आई वुड सजेस्ट दोनों करना चाहिए तुम्हें क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है तो तुम सीसी पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड कर सकते हो एंड लीड कोड पे डीएसए अपने कॉन्सेप्ट कर सकते हो ऐसा अगर तुम सीसी के करते क्वेश्चंस इनिशियल क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि कितना डिफर करता है डीएसए क्वेश्चन से या सीपी क्वेश्चन से लाइक आई एम सेइंग कब से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन तो तुम्हें आइडिया मिलेगा कि उसमें क्या रहता है ऐसा क्वेश्चन में जो हेल्प करेगा तुम्हें इन जनरल क्योंकि करते ओएस में करते क्वेश्चन कहाँ से कैसे भी आ सकते हैं तो सीसी विल हेल्प बेटर Any other questions? मेंटर्स तुम लोग को कोई क्वेश्चन मतलब मेंटर्स क्या बोला हेड्स तुम लोग को कोई क्वेश्चन है तो तुम लोग भी पूछ सकते हो हेड्स है क्या भाई काम तो हेड्स ही है आकर्षित है अंकुर है तो यहाँ पर से तुम क्यों रहे ये वो भी है क्वेश्चंस नहीं है बट बता या उसका प्लेसमेंट लग गया तो उसका तो हो गया भाई सेट हो गया भाई ओके ठीक है और क्वेश्चन नहीं है आई थिंक बहुत लेट हो गया है सो वो लिंक्स में भेज दूंगा मैं तेरे को और शुभम को मैं मैसेज कर दूंगा और वो फॉरवर्ड कर दूंगा जो भी लिंक्स चाहिए बाकी अगर जो और भी कोई क्वेश्चंस रह गए तो ग्रुप पे डाल देना या फिर अपने पर्सनल ग्रुप्स पे डाल देना एंड वो मैं शुभम को फॉरवर्ड कर दूंगा और अगर जो रिसर्च के बारे में बोल रहा हूँ और पर्सनलाइज जिसमें फीडबैक का करना है so वो इंडिविजुअल सेशन हम लोग लेंगे सो अभी अपने ग्रुप्स में एक कोई अपना टाइम स्लॉट फिक्स कर देना कि ये टाइम स्लॉट पे मेरे को लाइक अपना रेज्यूमे का रोस्टिंग या टीक या जो भी वैसे करना है सो ये अपने लाइक ग्रुप्स में डाल दो अपना टाइम बाकी आई थिंक दैट्स एवरीथिंग राइट मिहिर और कुछ बोलना यस यस काफी कुछ ओके सो मैं there's फाइल a few बना दो